सो मानना तो पड़ेगा। आज सुबह Hare Krishna. अमेरिका So के today अनुसार morning, कल रात को or according to United States, अमित yesterday नारायण प्रभु night, Amit Narayan भगवान Prabhu बालाजी के समक्ष in यज्ञ कर front रहे थे, of यज्ञ करा Lord रहे थे Balaji were और organizing वही this fire sacrifice or yajna स्टूडियो में बैठकर while sitting at the हम studio. सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। So he's guiding पता us. नहीं ये आदमी कब सोते हैं, कब जगते हैं, कब जाते हैं, Don't know when he sleeps कब and when फ्लाइट he पकड़ते goes, हैं, कब वापस आते हैं, लेकिन भगवान when he flies and when he अपने comes back. भक्तों को But शक्ति देते हैं। the Lord provides जब कोई भक्त strength to his devotees. When a रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता devotee है, जिम्मेदारी लेता takes a है responsibility, और वह शुभ संकल्प यदि हम करते हैं and if तो उसे we पूर्ण करने कराने की जिम्मेवारी भगवान की take हो a जाती है। devotional or spiritual सो कल रात को vow or निर्धारित के pledge, अनुसार then आज सुबह the हमने देखा doctor, the Lord श्री Himself बालाजी के concludes समक्ष, it. चलो हमारा मान तो रखा, हमने कहा था तिरुपति बालाजी में यज्ञ कीजिएगा। So He has kept my word. बालाजी तो थे, I told तिरुपति that थे या नहीं पता नहीं, they should तिरुपति थे perform a sacrifice और फिर in गया में Tirupati भी Balaji. श्राद्ध विधि And in Gaya हम also सब they के लिए perform पितृ पूजा, oblations for our forefathers. फिर हरिद्वार में, And अभी in वृंदावन Haridwar यमुना में, and on by the banks सो of बहुत सुंदर Yamunaji in जितना Vrindavan. भी हो So सके very beautifully, उतना प्रयास whatever could have been किया जा रहा है done, और इसके we are हम trying सब our best, साक्षी हैं, and we कि all नहीं? are on इसके हम सब गवाह looking हैं। at this, or we are the witness. आइए, आज So अंतिम दिन है। today is the last day of this वैसे पितरों का स्मरण तो holy रोज month करेंगे, रोज करना of our चाहिए, ancestors. So we लेकिन will इस remember प्रकार our समूह में ancestors and बैठकर, forefathers, इस प्रकार and we will do it, and we should सभा do it में on a daily बैठकर basis. But while sitting पितरों in का an स्मरण assembly, करने का अवसर remembering our केवल ancestors, साल में एक बार such an मिलता है। opportunity we get once in a year. एक बात की कमी रह गई, लेकिन So अगले one thing that was lacking, but मेरे next मन year में we will try to लास्ट में remember बड़ी this. इच्छा हुई, During क्यों ना the इन end, I 15 had this दिनों में desire that हमारे why not जितने on भी these श्रोता 15 जगत days, से भक्तगण हैं, all our listener अपने अपने devotees, पितरों का स्मरण हम सब के बीच में करें they और should उनमें कोई भी remember गुण them अपने अपने in माता front of पिता us पितरों and का telling कोई the एक गुण, quality एक of them, विशेष लक्षण जिससे हम or a सबको special प्रेरणा quality प्राप्त हो which सके, could inspire ऐसा नहीं us. करना चाहिए था? Should not करना we do चाहिए this? था। मुझे आज स्मरण हो रहा है, फिर भी आपके पास समय हो तो कर सकते हैं, लेकिन तो If you मेरा have time, you can do it. Let me do mine. मेरे पिताजी तो अभी इस संसार में है, लेकिन पिताजी के My पिताजी, father is सो मेरे दादाजी, still there in this world. So my उनका नाम grandfather, था मोहन, whose name हमारे was रहने मोहन जी Mohan, दादा कही है। and we सो used to address him लगभग as Mohanji Dada. मैं पहली कक्षा में पढ़ता था And I was और in आज my भी मुझे first मेरे दादाजी standard, याद है। देखो, and I still मैं एक remember him. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे Let me सबको give you an अपना अपना example. करना चाहिए। Everybody अमित should नारायण do प्रभु, आपके like चरणों this. में प्रार्थना, सबको मौका मिलना चाहिए। So I am मैं तो requesting from Indra Prabhu that लेकिन everybody should ऐसा get an मौका सबको opportunity. होना चाहिए, ज्यादा लंबा जोड़ा भी नहीं, लेकिन एक एक गुण, ताकि हम सबको At प्रेरणा least मिले। one quality मेरे so that पिताजी we की all get प्रेरणा मैं inspired. आपको कहूँ, So let me मुझे tell आज you the पिताजी को inspiration याद आते हैं, वो दिन from my याद आता है। grandfather. I still वैसे remember तो वो him, गुजरात and में those गांव में days रहते थे, he used to हम reside लोग मुंबई in में रहते थे, Gujarat, भारत में मुंबई में। in सो कभी village, कभी and गांव we से used to reside in मुंबई आते Mumbai. थे So sometimes और he used मुझे to बहुत लाड travel लड़ाते थे। and visit us, and he मैं पहले used से ही to love पढ़ने me a में lot. कमजोर आदमी,
पढ़ने का कोई मूड नहीं। I मैं अपने was भक्तों मित्रों के साथ since बैठता हूँ तो कहता हूँ childhood मैं मेरी लाइफ I में was एक not दिन भी very स्कूल good या in कॉलेज में studies. आनंद से नहीं गया। In my whole life, I वाइफ वो haven't visited टिंगा टोली my करी ने school घरे थी धक्का with मारी love or in a और pleasant मेरे mood. I was always बच्चे forced to थे do और that. माता पिता की तो बड़ी आशा थी पढ़े लिखे कोई बड़ा And इंजीनियर बने parents had आप लोग this expectation that they should एक तो study स्कूल and में they should do और फिर something. ट्यूशन And भारत में तो then दोनों I चलते थे। used to go to tuition. फिर स्कूल से होमवर्क मिलता है ट्यूशन से होमवर्क So मिलता है कौन मगजमारी करेगा। we used to get so much homework from school and तो from जब tuition भी as well. स्कूल से आते थे But और who फिर is ट्यूशन going to waste तुरंत so होता much था time और on जब that? होमवर्क देकर जाते थे तो मैं रोने लगता So था I used कि to मुझे ये सब cry. करना नहीं है, सब होमवर्क नहीं करना। I don't want to study at तो all. माता जी पिताजी डांटते थे करो करना पड़ेगा। Parents दादाजी used बीच में आ to जाते थे scold भाई वो and say लड़के that को you कोई have to do नौकरी it. नहीं करवानी है, तुम लोग इतना बड़ा धंधा बिजनेस करते हो बिठा देना दुकान में, My grandfather क्यों used इतना to बढ़ाते say हो। that we चल don't लाला want मुझे him लाला to कहते study थे, that much. चल लाला मेरे साथ। We ये रोज डेली का he can शेड्यूल sit था in मेरा the business रोना, that you have said, and माता जी का this डांटना और was our daily दादाजी का बीच में schedule. That आना। I used to ये फिर रोने cry, लगता and था। my parents मुझे used आज to भी याद scold है me, 4 and बजे my तुलसी का grandfather used to कार्यक्रम come in होता था। between. फिर I वो still फिर remember 4 बजे it लेके used to बैठ be जाते around थे, कुछ 4 पढ़ना नहीं है, 4 कोई p.m. मगजमारी He मत कर, used to छोड़ say इसे, that you need चल not to मेरे worry साथ। about your studies. फिर You should मेरे come with दादाजी me. मुझे And मंदिर में then लेकर जाते थे। he ये used हमारा to स्केड्यूल take होता me था, to the चल हम temple. जाते हैं। And this तो was our वो schedule. चलकर वो मुंबई में भी धोती कुर्ता पहनते थे, गांव से आए थे। So in Mumbai also, as फिर he बोला was चल मंदिर, the फिर village, he मंदिर used में to बैठते हैं, wear मुझे dhoti आज भी kurta, याद है and we used बैठते to हैं, sit in the फिर temple. वो थोड़ा सा And I still प्रसाद remember, मंदिर का, and he used to feed us फिर the मुझे कहते prasad क्या from खाना there. है, And मैं then कहता he मुझे used to आज say, भेल "What you खाना want to है। eat?" तो रोज I भेल used to पूरी say, खिलाते, एक मुझे खिलाते एक "I वो will खाते eat और bhel." फिर हम घर पे आ So we जाते। both used to eat the शाम हो bhel, and जाती we should सो come back. जाते। सो दादाजी दादाजी भजनिक And हुआ then we करते थे, used to come home, भजन and we में used बड़ा to sleep. इंटरेस्ट था उनका। So सो my grandfather was वही very much छोटे छोटे interested in संस्कार बचपन से bhajan ही and मेरे those भक्तों small, की ओर small उन्होंने मोड़ा culture और फिर that धीरे धीरे was और हमारी माता जी put माने in our हमारे पिताजी lives की माँ at that time वो भी was हमें very, स्मरण very है। effective. मैं And I उन remember दिनों अमेरिका में my था, कोलंबस paternal में कथा grandmother कर रहा also. था, I अजान was in मिलकर सब चल America रहा in था और Columbus. न्यूज I आया was doing the katha कि in of दादाजी Ajamil, का and we got the news देहांत हुआ, that she has left अभी this अभी की world बात है। तो उनकी मैं महिमा not कहूँ long back ago. So तो if I मैंने मेरे glorify जीवन her में in my whole जितनी life, सहन शक्ति the मेरे tolerance बापू that में I have देखी है seen उतनी in किसी में her, नहीं देखी। I haven't मतलब seen in anyone. सहनशीलता की मूर्ति। She was the और epitome जब of हम इन tolerance. बुजुर्गों को वडीलों को And पितरों को when देखते we हैं see हमें these तो बाहर forefathers, जाने की our जरूरत ही नहीं ancestors, पड़ती, we need not to बस go इनके थोड़े से outside. गुण हमारे अंदर आ If जाएं we just तो get हमारा some जीवन बदल qualities of जाए। them, हमारे दादाजी, then मैं we अभी जो will be very मोंजी grateful. दादा की बात कर रहा हूँ, दिन भर खेती करते So my grandfather और फिर खेती used to करके be a शाम को farmer, जब वो and he घर used पर to work आते hard. और And फिर गांव evening he की used to come बाजार back, में हमारे તેને પાદર and કહેવાય, ગામના ચોરે બેસી in और the middle भजन of गाते the थे। village, he तो used to भजनी sing bhajans. भजन गाते थे और उन्हीं की कुछ सुकृति सत्कर्म आज And because हमारे of their परिवार में piety हम लोगों के जीवन में that आई और हम भजन came in साधन में our लगे। family and life, and we तो got पितृ involved in पक्ष चल spiritual रहा है और journey. ये So this Pitru Paksha is समाज going मेरा on. अपना ही समाज है, So यह this is समझकर my own मैंने कुछ family अपनी and बात रखी। society. So that is why लेकिन I मैं have चाहता हूँ कि presented ऐसी बात my own life. आप But I सबको expect रखनी or चाहिए। want or ये desire that मौका you सबको all should मिलना also चाहिए speak. अपने अपने Everybody should पितरों get का this स्मरण करके opportunity to उनका कुछ speak गुण याद करके। about their सो हम grandparents or ये पितृ forefathers. तर्पण क्रिया विधि के द्वारा तो श्राद्ध कर ही रहे हैं, So we परंतु all are offering our स्मरण करके sacrifice भी ये oblation, श्राद्ध होना but चाहिए। by remembering them also we should or we प्रश्न can हो do that सकता है as well. कि So there आपके might be a दादाजी है question that और बीच में your पिताजी है। grandfather, and then हमारे there is गुजराती में the एक शब्द છે father. કે તમારું કરેલું શ્રાદ્ધ તમારા દાદાજીને અડે उसको टच होता, उनका बेटा करेगा, मतलब मेरे पिताजी श्राद्ध करेंगे So तो
They दादाजी say को that if my father do it, then my grandfather will get it. If I do it, then will my grandfather get it? So today I'm going to tell that who लिखना है तो can लिख लीजिए श्रीमद् offer भागवत का आधार sacrifice. So लेकर on किसने the किया basis or वो सारा foundation of कारण Bhagavatam, कुछ होता है who can आप perform लिखिए and where it can सबसे पहले happen, how पितामह it can be भीष्म को done. याद करते गंगा So पुत्र first and भीष्म foremost, let's remember Bhisham Pitama, गंगा पुत्र अब the son श्राद्ध of का Mother समय है Ganges. So और it पितामह is the भीष्म time को of याद Shraddh, नहीं and we करेंगे don't remember तो Bhisham Pitama, श्राद्ध अधूरा then रह जाएगा it अंतिम will दिन है be तो incomplete. लगे हाथ भीष्म पितामह को याद करें रक्त सनाहरती रहे हे रक्त सनाहर बाण रक्त सनाहरती रहे रक्त सनाहर बाण रुंधा रुंधा हर कंठ है रुंधा रुंधा है आकाश रुंधा रुंधा है अर्जुन ने छुए चरण लिए हृदय में घाव आज गिरा हो भूमि पर जो कोई आकाश जो कोई आकाश पितामह भीष्म हैं Pitama जिसका श्राद्ध Bhishma, हम सब whose करते हैं oblation ऐसा we कहते हैं all कि do, श्राद्ध पक्ष में whom भीष्म we को all याद ना venerate. करें It is mentioned तो that in श्राद्ध Shraddha Paksh, if we परिपूर्ण don't नहीं remember होता Bhisham Pitama, ये then it is सबके considered बाप है incomplete because he is the पितामह भीष्म के forefather of विषय में everyone. खुद भीष्म ने अपने मुख से कहा भागवत का ये वचन है Bhisham Pitama himself has said, जब and this भीष्म is के the word of जीवन का अंतिम Bhagavatam, दिन था that उस during the कुरुक्षेत्र में बाणी की last days शिखा of पर his life, लगभग 50 दिन तक वो सोए और फिर एक and दिन for स्वयं 50 भगवान days श्री he was कृष्ण sleeping, चलकर and पांडवों के साथ पितामह भीष्म के पास आए Krishna came along with Pandavas तब to पितामह भीष्म Bhisham कहते हैं Pitama, कि युधिष्ठिर and the grand हे sir अर्जुन Pitama वीर says, say, सदेव "Oh, my dear पश्य Pandavas, द्रुत oh Krishna, अनुकंपितम ये कृष्ण की अनुकंपा तो देखो look at कि his मैंने जीवन mercy भर that दुर्योधन throughout का my साथ life दिया I have मैंने जीवन भर partaken अधर्म का or पक्ष supported लिया Duryodhana. यहाँ I तक was कि always जब on the भारत side के of रण संग्राम में unreligiosity. Not only मैंने that, उलट in उलट the कर battle कृष्ण of के ऊपर बाण Kurukshetra, चलाया I had मैंने कृष्ण attacked का कवच the तोड़ Lord. दिया उनके I शरीर broke से his खून की shield धारा and निकली his blood was oozing मेरे from जैसा the body. कट्टर मेरे There जैसा cannot be आज्ञाकारी जिसको anyone who स्वप्न में is भी so प्रभु का दर्शन criminal, नहीं हो violent, सकता who लेकिन couldn't आज even वह have कृष्ण dreamt स्वयं of having an साक्षात audience with the Lord, but that Lord अपना दर्शन Himself देने के लिए is मेरे पास has चल came कर here to आए give His own audience to me. मैं भीष्म He came स्वयं all the चल way, नहीं walked all सकता the way कहीं to जा meet नहीं me. सकता I बाण cannot की सड़क walk पर हूँ as I am on लेकिन this bed of साक्षात arrows, कृष्ण but दर्शनम आगत कृष्ण the साक्षात Lord चलकर Himself मेरे has पास आए come to give me His क्या मेरी audience. भक्ति के कारण Is it भीष्म ने on कहा the नहीं strength महाराज of मैंने क्या my किया unalloyed devotional मैंने तो service? What दुर्योधन have का I पक्ष done? लिया I मैं तो have अधर्म के always पक्ष में रहा supported मैंने तो कृष्ण पर Duryodhana बाण and चलाए supported मेरे जीवन में ऐसा unreligiosity. कुछ नहीं I था कि attacked कृष्ण मुझे Krishna. अपना I didn't have दर्शन दे anything in my life that worthwhile कृष्ण that आज the Lord मुझे could give दर्शन me an दिया है audience, but today He तो has given me His तथापि audience, अतृप्त and भक्तेषु पश्य only for only one गोपालकल्पितम reason, भागवत and में that श्री जी is कहते हैं in Bhagavatam. Sri Sud कि Goswami शुद्ध writes भक्त की भक्ति के that कारण on the strength भीष्म ने of भक्ति the नहीं की थी बाकी devotional चरित्र में service देखें of तो his भक्ति पांडवों ने devotee. की थी So और Pitama Bhishma पांडव has यानी not भक्ति performed any भीष्म unalloyed की devotional नहीं service अड़ी towards the Lord if we look अड़ती है outwardly. कई बार कुछ But लोग कहते हैं ना हम भक्ति करें तो पितरों
Pandavas have performed pure devotional loving service towards the Lord, and which gave the fruit to Bhishma Pitama. And this is the proof from Srimad Bhagavatam. Bhishma Pitama will never say that he is a pure devotee, but he says that by the mercy of stalwart exalted devotees like you who have performed pure loving devotional service to him. But Krishna might have thought that I'm not his devotee, but the Pandavas are my devotees, and he's the grandson of the Pandavas. So therefore, I should liberate him or benefit him. So the great grandsons performed devotional service, and the grandson got the results. આ બધું અડે નહીં તો ઘણી વાર અમુક કે ને કે ભાઈ ખાલી हम So अकेले it affects. So otherwise, people can say that we come alone and we go back alone, and who does devotional service, he will get the fruit. So, but we all are tied up because of our karma or the deeds. एक बार So once तत्कालीन मन में एक कथा याद है, ऋणानुबंध क्या होता है, I just want to share that what is the bondage of our relationship according to our past actions and karma. So once एक हंस और हंसली, हंस जो there was this swan, अकेले नहीं, and the swans are always in a couple. जब हंस का फोटो दौड़ते हैं तो वो कपल में When someone draws the picture of the swan, then that time also they are shown as a couple. So they both were roaming on the Mansarovar lake while they were discussing with each other that the Lord has given such a beautiful life, but look, we are not able to go on a pilgrimage. We cannot visit Gokul, Mathura, Vrindavan if we could have been able, because we cannot fly that much. If we could have gone, how good it would have been. And at that time, a eagle came because he can fly for a long time, and he heard this conversation. So he said, I can take both of you on the pilgrimage, but on one condition. एक लकड़ी चोंच में पकड़ूंगा, I will keep a wood in my beak, and you also should hold that wood with the beaks, and I will fly with you, and I will take you on all the pilgrimage. But you should remember, you should not speak, because if we speak, then you will lose the grip on the wood and you will down. You have such a great fellow. You're a good devotee. So the swans took hold of the wood, and Garuji also had this wood on in his beak, and he started on pilgrimages. So they covered 4 or 5 places. Then the swans had so much love and affection towards this eagle. He's taking us on a pilgrimage. They said that you should not speak. But they were so much overwhelmed that they had so much overwhelming emotion. This when they just started speaking and they both fell down. So it is said that in their next birth, this eagle turned into a Shravana, and these swans became his parents. And in the same manner, he took his parents on a pilgrimage. Rinanu Bandhan. So we all are tied by or indebted by the bondage of our relationship. So although
the Pandavas have performed unallied devotional service, but looking at that, Krishna had liberated or had been merciful on their grandson, although he didn't perform any devotional service outwardly. So the great learned scholars say this Ekanta Bhakta we can take Shantanu. So Bhishma Pitama says that I haven't done anything. By the blessings of my father Shantanu, the Lord himself has came to give me his personal audience. I haven't done anything. I just served my father, that is King Shantanu, whose wish I fulfilled, and by his blessings and mercy, I could attain the Lord at the time of my death. So, this also implies that by the mercy of a father, even the Lord gets the Lord, the attains the Lord. So, the oblations given by a father also can benefit the son. And then, if we proceed further, that the great grandchildren's devotion affected their grandson. And then we have an example of Dhruv Maharaj, where when he was about to go to the eternal abode of the Lord, he said that before me, my mother should leave. So, uh, it is mentioned that Dhruva's mother had performed devotional service, that Sunita used to go, Mother Suniti used to go and attend Mangalati. So there was not a single reference of her performing unalloyed devotional service to the Lord. But by the devotional service performed by her son, she got the benefit. So I'm just giving you all the relationships. So अच्छा, पुत्र के द्वारा पिता का उद्धार, so प्रहलाद के by Prahlad, his father attained the eternal abode of the Lord. We heard it in the on the first day that because of the devotional service of Prahlad, a demon like Hiranyakashipu got benefited. So the father got the benefit of son. And if we see the reverse, that if sometimes mothers say that our children don't perform any devotional service, but let's take a reference of Uttara. She was pregnant. Ashwathama attacked her, and she took the shelter of Lord Shri Krishna, and Lord Shri Krishna protected her son. But what devotional service have King Parikshit performed from the womb of his mother Uttara? He was protected not because of his the son, but because of the mother. So mother Arala devotional service affected, protected his son, and the reverse is also true. For example, we said about Dhruv Maharaj and his mother. So by devotional service of a spiritual master can benefit a disciple. For example, Sukdev Goswami's devotional service affected the disciple, that is Parikshit Maharaj, and the reverse is also true. Sutikshna ji in Ramayana got Lord Sri Ram, but he said that you should benefit my spiritual master Agastya Rishi. And because of Sutikshna ji, Agastya Muni got the personal audience of Lord Sri Ram. So these relationships are interdependent, bounded in because of our indebtedness, because of the relationship. And if we perform devotional service, it benefits them. And if we are a devotee, then he will always think that I should be benefited, but before that, my parents, my forefathers and sisters should be benefited. And the example of that is, if you see this mother, Ganga, to cross this mother
Ganga, Lord Sri Ramchandra came and he saw there was not a single sailor and not a boat inside, but there was this cavert, and this cavert was called, but he told from far distance that he said that you can find someone else. I'm not going to come. The Lord said, "What is your problem?" He said, "I know your glories very well. If someone tells this, then we won't be able to sleep." So what did Kevat said? "I know everything." So now Ramji got inquisitive that what does he knows about me? So he said that come here and talk to me. And this Kevat comes and says, there is no problem in you, but the dust of your lotus feet. It has the potency to transform a stone into a beautiful woman. So yes, the the dust of your lotus feet has this potency. By the strength or potency of your dust of the lotus feet, a stone turn into a beautiful woman. And if your feet will touch my boat, then she will also transform into a woman, because stone is still hard and wood is softer, so it will definitely turn into a woman who will be young. And oh my lord, you can marry 1,000 times, but for us, one is sufficient or more than enough to handle. So I somewhat just take care of my family, and I don't want to lose my livelihood. If you transform the boat, then I will be without any job. Lakshmanji is getting agitated. Ramji told, you might have some solution for this. He said, there is one solution, but your brother will not allow me. I can see from his official expression. So Ramji said that, no, you don't hesitate and please let me know. He said that if I wash your lotus feet with my own hands, और फिर मुझे कॉन्फिडेंस हो जाए कि नहीं and आपके चरण if I'm confident that there is no more dust on your lotus feet, then I can take you on my boat. इतना बोलते ही लक्ष्मण जी समझ गए कि Just इसको चरण saying धोने this, हैं और ये नाटक कर रहा है कि Lakshmanji मुझे मार understood दूंगा that he मार wants to दूंगा wash अभी the lotus feet. तब केवट कहता है Lakshmanji said that I am just going to kill you. पद कमल दोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो हे मोही राम राउरियान दशरथ शपथ सब साची कहो बरु तीर मारहूं लखन पे जब लगिन पाय पखारी हो ये तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पारू तारी हो। ये आपका भाई लक्ष्मण This is your younger brother Lakshman. He wants to kill me by taking bow and arrow in his hands. Oh Ramji, I am taking a pledge on your father's name. I will get killed and get destroyed, but without
washing your lotus feet, I won't allow you to ride my boat. And I'm not uh, scared that I will be killed by your younger brother, Lakshmana. Ramji understood प्रेम लपेटे अटपटे कि केवट ये जो है ना प्रेम के वचन है? these are the और words राम जी filled with sweet love, and Ramji started smiling, and और राम it जी ने कहा pacified कि Lakshmanji. अच्छा केवट तुम And मूल Ramji बात said बताओ that ना यार, तुम्हें चरण you धोना है just ना? come हाँ to the बोलता point that you want to तो wash फिर my सीधे lotus सीधे feet, धो लो, my ऐसा feet. नाटक क्यों कर रहे So हो? you can do it बोलो। straightforwardly. Why you are doing गोस्वामी so जी much कहते हैं कि जो pretense? भगवान दो Goswami ji कदम में says पूरे that ब्रह्मांड the को Lord नापने की who ताकत रखते हैं, had वो measured the whole भगवान universe आज in two केवट से steps, निहोरा कर रहे हैं today कि भाई पार करा he दे। is ये requesting भगवान this का kevat प्रेम है, भक्ति that है। please let केवट me ने कहा कि cross प्रभु रुको, मैं this घर से पात्र Ganges. पानी लेकर आता हूँ। केवट So दौड़ तो Kevat गया, says that let me bring a pot and some water राम to जी wash का your एक feet. चरण उठाया और धोने And लगा। राम जी ने कहा गिर he जाऊंगा। he केवट ने कहा started महाराज washing मेरे one सिर पर feet. हाथ रख दो, He said, "You थोड़ा can टीका keep मिल your जाएगा। hand on my खड़े head खड़े चरण to धुआए। get the support." एक चरण धो लिया, केवट So while he has washed his लक्ष्मण one जी मुंह feet, he बिगाड़ कर went back कहते to हैं his कि home. ये आपका Lakshman ji said, आधी दाढ़ी करके चला गया। अब प्रभु आप खड़े रहो ऐसे ही, "This आपको बड़ा प्रेम he होता है। has made you wait." घर पर गया, अपनी पत्नी बच्चों He सबको went लेकर home आया, and he bought अपने his सिर whole धुआया। family, हैं? and then और he अब let जो मैं आपको कहना everyone चाहता from हूँ his कि family केवट को wash जब the lotus भगवान feet of की the Lord. प्राप्ति हुई, When तब he केवट ने attained the बोला कि Lord, प्रभु then हमने सुना है कि आप Kevat told गुरुकुल में गए थे। बोले that गया था I कि have आपका heard that छोटा you भाई भी went to a गुरुकुल में गया Gurukul था। सीधा समझ लो with कि your brother. वाया राम बोलते हैं, आपका छोटा भाई भी हाँ वो भी गया था। तो गुरुकुल में कुछ पढ़े लिखे कि फिर So लाल गोविंद दास की तरह ढ? have you studied in Gurukul? पढ़े लिखे थे, हैं? वेदों के मंत्र आपको Yeah, we studied. खूब So आते हैं। are you aware of तो the प्रभु verses मुझे ना from the Vedic गया में scriptures? जाने का He अवसर said that नहीं मिला, I couldn't पर get अब an साक्षात opportunity to आप go to मेरे Gaya, घर पर and मेरे now स्थान that पर you are आए हो, here, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे so I need not to go anywhere. आपके चरणों में This ही is my जल अर्पण pilgrimage. कर देता हूँ, सीधे By पितरों को offering, पहुंच जाएगा। if I offer दो water at चार your lotus ऐसे feet, it मंत्र will बोल दूंगा कि यहाँ automatically पर भी reach तर्पण कर my दो। ancestors. And if केवट के you पितरों speak का some तर्पण verses, then सीधे I बोलो will गंगा में do कर the जाएगा, oblations to my क्योंकि forefathers. गंगा का स्पर्श भगवान के Usually चरणों it से is है। done by Ganga ji लेकिन or साक्षात भगवान के चरण on the उपस्थित banks of है, river तो कहीं Ganga. जाने की जरूरत But नहीं, सीधे भगवान के the चरणों water में of Ganges is राम the water लक्ष्मण that has सीता touched the बोले lotus feet of the Lord. और But here केवट ने चरण the धोए। Lord is here with his सो lotus feet. गोस्वामी तुलसीदास जी वहां पर So लिखते Goswami हैं कि Tulsidas ji केवट beautifully राम expresses जी को that गंगा पार कराए, उसके पहले ki- अपने पितरों को before Kevat भवजल पार करा दिया। made Ramji cross the river Ganges, भीतर before that पार he let करी all his पुनि forefathers and पुनि sisters मुदित cross गगन the भई material पार। ocean of existence. पितर पार, केवट ने अपने पितरों का पार करा दिया। सो कहने का अर्थ यह है कि So जो in सज्जन होते हैं, essence, जो भक्त a होते हैं, वो person अपना पूरा प्रयास who is करते हैं saintly, who कि is the अपने devotee, पितरों they का try कल्याण हो, hard पितर that प्रसन्न their हो, ancestors, पितरों forefathers की should be मुक्ति हो। benefited and इन satisfied 15 and be दिनों में liberated. हम And in सब these ने 15 हम days, सब ने जितना हो we सकता था all of अपनी us, अपनी ओर से पूरा प्रयास whatever किया, भागवत कथा we could do, सुनकर, we all tried our hard. We का heard दर्शन करके, Bhagavatam, we अनेकों प्रकार had से an audience with all the जपतन, अन्नदान, pilgrimages, सेवा, we offered भजन, water जितना भी हो सकता था and और भी अधिक करते food रहेंगे। for sacrifice, etc. लेकिन And वास्तव we में will go यही on एक doing सज्जन it. का But आचरण होता है, एक भक्त this का is आचरण the होता है। behavior of a saintly सो आइए person पितृ महिमा or a स्मरण modest करने person. के पश्चात अब So हम श्रीमद् भागवत now कथा का we श्रवण करें, should भक्त proceed कथा towards का the श्रवण करें, Bhagavatam pastime. क्योंकि But आज prior to मुझे that, as नरसिंह मेहता के पिता का श्राद्ध करवाना है। I am supposed to do the Shraddh क्योंकि of अब तक Narsi तो आप Mehta. लोगों ने श्राद्ध किया ना, अब भगवान So श्राद्ध till now you have done. करेंगे। So now the अब Lord तक का will काम perform the भगवान कैसे oblation. पूर्ण करते हैं, How the आइए Lord fulfills ये the श्रवण work करें। of इसके his पहले दो devotees. We पाठ will करके listen to हरिनाम that. But संकीर्तन। prior to that, हरे let's do the कृष्णा congregational हरे chanting. कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, राधे गोविंद भज मन श्री राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha Govinda, Radha Govinda, Radha Govinda Radhe. Radha Govinda, Radha Govinda, Radha Govinda Radhe. Jagannatha, Jagannatha, Baladeva Jaya Subhadra. Prabhupada, Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya, Jaya Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhu. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol,
करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण से स्वागत है उपस्थित वैष्णव वृंद का श्रीमद् भागवत कथा के यह 6वें दिवस में। और परम सौभाग्य है कि हम सब यहाँ पर इस 15 दिन जो कि पितृ श्राद्ध पक्ष यानी पितृ का समय है, इसमें पितरों की महिमा श्रवण कर रहे आ रहे हैं। और आज बहुत ही सुंदर अमावस्या, इसमें हम बहुत सुंदर कार्य संपन्न किया, परंतु फिर भी यहाँ पर आज पितरों की महिमा हम श्रवण कर रहे हैं, ताकि अगर किसी रह गया है फॉर सम रीजन किसी का, तो उसको आज के दिन पुनः उसको स्मरण करके उन्हें याद कर सकते हैं, जैसे प्रभु जी ने बताया। तो बहुत ही सुंदर यह पितरों की महिमा हम श्रवण कर रहे हैं, और हम इसके लिए विशेष आभारी हैं श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी के, और उनका विशेष स्वागत करना चाहते हैं कि वे अपने इस अमृतमयी वाणी के द्वारा हम सबको यहाँ पर पिछले 15 दिन से इस सुंदर महिमा श्रवण कराकर हम सबको कृतार्थ कर रहे हैं, और हम सबको अपने कर्तव्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी और साथ ही साथ इस भागवत कथा के मनोरथी भक्त जिनके इस सुंदर संकल्प के कारणवश हम सब ये कथा श्रवण कर पा रहे हैं। तो ऐसे हमारे महेश भाई पटेल, हमारे महेश प्रभु जी और मोना माता जी तथा ये समस्त पटेल परिवार एवं श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी का हम एक बार महामंत्र उच्चारण करते हुए उनका स्वागत और अभिवादन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। और साथ ही साथ स्वागत और धन्यवाद करते हैं हमारे उपस्थित अमृत चर्चा परिवार के समस्त श्रोतागणों का, जो कि यहाँ पर प्रतिदिन बड़े ही भाव और प्रेम के साथ में उपस्थित होकर यह कथा श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। वैसे हमारे अमृत चर्चा के श्रोतागण और साथ ही साथ जो हमारे YouTube फेसबुक के श्रोतागण, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और जैसे प्रभु जी ने आज कथा के प्रारंभ में कहा कि किस प्रकार जैसे प्रभु जी के मन का विचार, जैसे उन्होंने बात की कि अगली बार शायद हम हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पितृगण हैं, उनकी कोई ऐसा गुण हम सबको बोलना चाहिए जिससे कि हम उनसे जीवन से ये सीख सके, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। और प्रभु जी ने कुछ अपनी कथा कही यहाँ पर, अपने विषय में बताया। जैसे प्रभु जी ने अपने बचपन से लेकर कॉलेज लाइफ तक कुछ बताया, और किस प्रकार प्रभु जी ने कहा कि प्रभु जी को स्कूलिंग या कॉलेज वगैरह इतना पसंद नहीं था, परंतु फिर भी जो हमारे जो मोहन जी दादा थे उनको इतना प्रेम देते थे, स्नेह देते थे और उनको सपोर्ट करते थे। तो हम वास्तव में धन्यवाद करेंगे मोहन जी दादा का, क्योंकि उन्होंने प्रभु जी को सपोर्ट किया। क्योंकि अगर उन्होंने भी प्रभु जी को डांटा होता और मान लो प्रभु जी उससे प्रेरणा अपने कर्तव्य कर लिए होते, जैसे कि इंजीनियर बन गए होते, तो आज हम इंजीनियर साइंटिस्ट बनकर भी दुखी होते हैं। जैसे हमारे बीच में ईश्वर प्रभु है, वो ईश्वर के साइंटिस्ट है, ओके,
और प्रभु जी आज अपने आप को अधिक प्रसन्न इसलिए मानते हैं क्योंकि वो भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं ये भगवान की कृपा है, और ऐसा कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हमारे ऐसे अनेक जो साइंटिस्ट है यहाँ पर, जो इंजीनियर है लोग जो बैठे हैं, मतलब बड़ी बड़ी फील्ड से लोग जो बैठे हैं, वो उस अवधि को प्राप्त करते हुए, मतलब उस स्थान को या फिर उस उपलब्धि को प्राप्त करते हुए भी दुखी होता है ना। तो ये भगवान की कृपा है हम सब पर कि उन्होंने प्रभु जी को पढ़ाई के लिए इतना प्रेरित नहीं किया, और बाद में इस प्रकार भजन भक्ति मार्ग से जुड़कर, हालांकि फिर भी प्रभु जी ने कंप्यूटर की साइंस डिग्री ली हुई है, वो हमें पता है, परंतु फिर भी ये भगवान की कहीं ना कहीं हम सब पर कृपा है कि प्रभु जी उस फील्ड पर इतने अधिक ध्यान नहीं दिए और आध्यात्मिक मार्ग को स्वीकार किए, जिससे कि हम सब देख रहे हैं कि हम लोग आज अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम सब आज इस मार्ग में लगे हुए हैं, भक्ति कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वैष्णव सेवा कर रहे हैं। तो एकमात्र ऐसे साधुओं की प्रेरणा है, इसके ऐसे साधुओं के मुखारविंद से कथा श्रवण करने का ही एक लाभ हम सबको प्राप्त हुआ है। तो हम इसके लिए भगवान के विशेष आभारी हैं, और मोहन जी दादा के भी विशेष आभारी हैं। तो धन्यवाद प्रभु जी, आपने ये प्रसंग श्रवण कराया, तो हमें तत्कालीन ये स्मरण हुआ कि अच्छा हुआ ये नहीं हुआ नहीं तो हम लोग बड़े स्थान पर होते हुए भी दुखी होते। तो कहीं ना कहीं भगवान ने हमारी ओर भी देखा आपके जरिए उसके लिए हम भगवान के अभिवादन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सो थैंक यू। और बहुत सुंदर हमारे अमृत चर्चा परिवार तथा अनेक लोग आज हम देखते हैं किस प्रकार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हजारों लोग, लाखों लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और प्रेरित हो रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम श्रवण करेंगे, कल भक्तों के भाव को भी सुनेंगे, तो पता चलेगा। तो धन्यवाद, उनसे भी स्वस्थ होगा। और जैसे हजारों लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, प्रतिदिन नए लोग भी जुड़ते हैं, और प्राय भक्त लोग परिचित नहीं होते कि किस प्रकार हम प्रभु जी के संपर्क में रहे या फिर इस प्रकार कथाओं के संपर्क में आ सके। तो उसके लिए हमारा एक परफेक्ट सेवा नंबर है, आप इसको नोट कर सकते हैं, जिससे कि आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, आने वाले प्रत्येक कार्यक्रम को देख सकते हैं और इस प्रकार हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। तो आइए हम ये सूचनाएं फिर कभी आपको उपलब्ध कराएंगे, परंतु अभी हम जो प्रभु जी ने बताया कि भगवान स्वयं भी नरसिंह मेहता का पिताजी का श्राद्ध करने आए, तो वह सुंदर कथा, उस प्रसंग को श्रवण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये निवेदन करते हैं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। उपस्थित Hare Krishna. I welcome all the loving devotees of the Srimad Bhagavatam, this all the attendees, devotees. I also welcome and extend my warm gratitude to the senior devotees who have decorated this assembly by their presence, and all the listeners who have joined through the medium of Govind TV, Facebook, YouTube, etc. It is all the listeners and
the organizers of this beautiful katha, the श्री महेश residents भाई of Portland, और मोना America, बहन, Mahesh Bhai ये and तीन Mona पीढ़ी Ben. एक साथ बैठी हैं, So देख 3 रहे generations are हैं। sitting together. You can see. So આ પેઢીઓને હાચવજો, આમ વહી ન જાય બહાર। So, अपने पावन पूर्वजों की In the reverie of their pious forefathers, भोगीलाल, Pushpaben, प्रभुलाल, Sundarlal, अमृतलाल Prabhulal, और Amit, मोहित, and Mohit. इन सब के स्मरण में So समग्र in पटेल परिवार, their चंद्रकांत memory, भाई, शोभना बहन, Chandrakant Bhai, सुरेश भाई, उषा बहन, Suresh Bhai, Usha Ben, हर्षित किंजल Harshit, Kinjal, और हाँ दीनू बहन, प्रभुलाल Dinu भाई Ben. पटेल। सो आप सभी भक्तों का So श्रीमद् I भागवत welcome कथा you के all षष्ठ दिवस on में the 6th day पुनः of एक बार this katha. हार्दिक स्वागत Welcome back एवं and आप सबके चरणों please में accept our हार्दिक humble प्रणाम। obeisances at your lotus feet. राधे Radhe Shyam. ये जो आप देख रहे हैं ना, So as you ये see जूनागढ़ है this और ये backdrop, this is जूनागढ़ Junagadh का गिरनार है and this is the Girnar mountain और of Junagadh. हमारे वहाँ कहावत है कि And मनुष्य it is जीवन मिला a saying or a proverb और that गिरनार if नहीं you've got किया a human life and you haven't तो visited मनुष्य जीवन Girnar, व्यर्थ है। then you have wasted your whole आप life. लोग बहुत दूर रहते हो, गिरनार You भले नहीं all जा सकते, might दर्शन be तो कर लीजिए। living far off and you won't be able to visit, मारी but you can at least have an કાઠિયાવાડમાં કોક audience દીને ભૂલો પડ in ભગવાન પછી Kathiawar. એવા કરું સન્માન કે તને સ્વર્ગ ભૂલાવું શામળા સ્વર્ગ भी भूल जाओ You will forget ऐसा even स्वागत the heavenly ऐसी planets. सेवा हम We will करेंगे serve you in this एक manner, बार but first, जूनागढ़ में at आप least जाइए। once, you should ऐसा come कवियों ने visit गाया है। our Junagadh, which is sung by many, many poets. भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं In Bhagavad Gita, Lord Shri Krishna संभवामि says, युगे युगे Yam Bhavami और Yuge Yuge and परित्राणाय साधूनाम, Paritranaya साधु संतों Sadhuna, के लिए, भक्तों के लिए for मैं the युग युग pleasure में of the अवतरित होता हूँ sages, saints, and devotees, और भगवान I manifest अनेकों again and अवतार again. लेकर And अवतरित Lord हुए हैं, has लेकिन incarnated आज in भी many, भगवान many का वही forms स्वभाव and है, many, many times. And हृदय it से is प्रेम his से उस भगवान का inherent स्मरण quality किया or जाए nature that if तो someone भगवान आज भी remembers him दौड़े with चले love, आते हैं। then he comes running towards the और इसका devotee. ज्वलंत प्रमाण है And the living गुजरात example of सौराष्ट्र that के संत is श्री the नरसिंह great मेहता। sage from Saurashtra, that is Narsi Mehta. मुझे नहीं लगता है कि किसी भक्त के जीवन I में don't think भगवान any इतनी other बार आए devotee होंगे। has came so many times as he श्री came नरसिंह मेहता के समग्र जीवन काल to में him. भगवान So in his द्वारकाधीश lifetime, कृष्ण ने एक नहीं दो Dwarikadhish नहीं Krishna, 52 not once or बार twice, 52 times, कृष्ण उनके समक्ष प्रकट हुए Krishna और came केवल and gave his प्रकट ही नहीं personal हुए, audience. And not only that, नरसी के that he सारे appeared काम or करके manifested, चले गए। but he worked with him and क्योंकि left. भक्त का काम Because ये भगवान a को अपना work of a काम devotee समझते हैं। is taken as कई his बार हम own भक्तों के मन में responsibility by चिंता the Lord. होती है ना Sometimes we devotees कि get भाई worried and हमने तो हमारे anxious that पितरों का श्राद्ध किया लेकिन पीछे कोई we have भरोसा नहीं है, done the आगे का तो oblation or हमने देख लिया, sacrifice for us, लेकिन but ये what पीछे will वाला जो happen पार्ट है after आज की जनरेशन, we leave? What will happen after इस पे that? भरोसा This नहीं है। new हमारा generation, श्राद्ध we ये लोग cannot trust them करेंगे ना, whether they will कोई offer बात नहीं, their संस्कार sacrifice देना to me. चाहिए So we should give और them सब culture सिखाना चाहिए, and the लेकिन knowledge, यदि and we हम should teach भगवान से them. संबंध But जोड़े, if we attach a relationship with प्रभु the की Lord, भक्ति करें, if we perform तो unalloyed devotional service towards the Lord, भगवान स्वयं हमारा then श्राद्ध the करते हैं। Lord Himself उस offer नाते से, उस oblations भक्ति for के us नाते से, on उस the basis संबंध के of our नाते से devotional service, and भगवान because of हमारा that करते हैं। relationship, हमारे the बंगाल में Lord भक्त हुए वासुदेव घोष, offers His oblation. So in Bengal, there was a devotee whose श्री name was चैतन्य Vasudev महाप्रभु Ghosh. के साथ यात्रा में थे और महाप्रभु ने He उन्हें आदेश used दिया
to be on pilgrimage with Chaitanya Mahaprabhu, and he was तो फिर ordered to महाप्रभु ने एक सुंदर take the householder realm of life, कृष्ण का विग्रह दिया, एक लाला and का he gave a विग्रह, beautiful बोले इसकी सेवा करो, deity गृहस्थी of को छोड़ो, Lord, that is घर Latu पर खाकर Gopal, and ऐसे said that सो you जाओ। should serve him and you should serve the Lord in this वो manner. भगवान की सेवा करते थे। So he शायद used गोविंद to serve घोष the या Lord. वासुदेव घोष, दो में से So एक है। he was घोष Govind बाबू Ghosh, है or ये was, पक्का है। but he was a Ghosh that I બધાને બહુ remember. યાદ જ હોય એવું તો Whether નથી. Vasudev Ghosh, હું અત્યારે I'm not મંગલા sure. ચરણ કરતો તો મંગલાચરણનો શ્લોક ભૂલી ગયો. તમે 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 વિશ્વાસ કરશો? मैं जय जय श्री राधा रमण, फिर बाद में मैंने पोज लिया, आप देख रहे हैं ना, मैं सोचा आगे क्या है। So I forgot मतलब the अभिमान mantra. तो करना So ही नहीं चाहिए we कि should मुझे never सारे be शास्त्र आते prideful हैं, that मुझे सब कुछ याद है। I know everything and I can शास्त्र remember किसी के everything. बाप के नहीं हुए आज The तक, Vedic scriptures इसका कोई are पार नहीं indebted to पा none, पाया। and nobody ये तो रोज can नवीन, cross नित्य them. नवीन। They are eternal, and सत्यनारायण every प्रभु time they are कहते new. थे ना, अच्छा हुआ दादाजी ने पढ़ने नहीं दिया, नहीं तो ये यहाँ नहीं होते, कहीं और ऑफिस में जॉब करते होते। सो मैं ये कह रहा था कि So शास्त्र किसी का I नहीं, was saying that भगवान the की कृपा है, scriptures are वो deep, बुलवा and लेते हैं, it's the Lord's mercy बुला that लेते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि they उन दिनों तो enable मैंने us to speak. परीक्षा नहीं दी, So those days I लेकिन didn't इस give समय any रोज examination, परीक्षा होती but है। this time I have ये to give रोज कथा वाले examination रोज on a daily basis. परीक्षा, हाँ? Every day the रोज katha नई is a new चेतना, नया examination, भाव, new consciousness, समय से new बैठो, mellows, समय से पूरा करना, क्वेश्चन sit पेपर on पूरा time हो जाना चाहिए, हैं? अपना मैसेज, वो and भाव, leave, वो and सब्जेक्ट, we वो have to टॉपिक, उसमें convey सारे our रस, subject वीर रस, करुण रस, हास्य, discourse, and ये all the इसमें तो rasas ये should भी be एक included, and whatever परीक्षा we ही have तो है। decided we should be able तो to speak. उस समय की That जो also is an परीक्षा है उसका examination. कोटा अभी पूरा कर रहा हूँ। So I am fulfilling that उस समय quota अगर now. खोपड़ी पड़ा होता ना, तो आज ये Had I फालतू studied that बकती। time, then बाकी I लोगों को क्या didn't होता have है to कि work so इतना hard पढ़ now. लेते हैं, इतना पढ़ लेते So हैं कि जीवन का पढ़ने का it so कोटा happens स्कूल कॉलेज that में ही they पूरा हो study जाता है। so much that their quota is finished in the फिर school ये and गीता college भागवत life. नहीं पढ़ पाते हैं। So they are unable to read अच्छा है, Gita and Bhagavad. हरि ने जो भी किया। So it was सो God's नरसिंह will मेहता and के it जीवन में happened for good. कृष्ण 52 बार प्रकट हुए। मैं So घोष Narsi बाबू का कह रहा Mehta's था, life, 52 times he appeared. I ठाकुर was जी उनके discussing घर पर about Ghosh गए Babu. और उनको कोई पुत्र नहीं So he था। had this उनके Thakurji, हृदय he में एक didn't have शोक any था, son. एक दुख था कि So मेरा he बेटा had नहीं, this और कहीं grief से or ऐसी कथा sorrow that सुनने I को don't have a मिली। son. And when पितृ he पक्ष heard वाली this कथा pastime about the कि Pitru भाई Paksh, श्राद्ध होना जरूरी है, that पितृ तर्पण जरूरी है, the एक दिन रोने oblation लगे। should be performed. So एक दिन he रोने लगे, मेरा became क्या होगा, मेरा कौन so श्राद्ध करेगा, sorrowful, he मेरा कौन started crying तर्पण and said that, करेगा। who will take care of me? Who will तो offer पितृ और sacrifice नरसिंह once वो I leave? ठाकुर जी बोलने So लगे from the deity, the Lord कि क्या started मैं speaking आपका himself. बेटा नहीं हूँ? He said that, don't you consider आप me मेरी as सेवा your करके son? मुझसे इतना अच्छा You संबंध serve जोड़ me. कर रखे हैं, You have मैं such a आपका beautiful श्राद्ध relationship with करूंगा, आप me. चिंता मत I कीजिए। will offer oblations for you. You should not be घटना तो worried. ऐसी भी घटती है So there is this कि एक दिन situation घोष बाबू कहीं that बाहर once गए थे और घर पर Ghosh श्राद्ध Babu है, was not अतिथि at home, आए, and there were और some उनका guests प्रण at था his कि home, अतिथि को and भोजन करा के he संतुष्ट had this करके pledge ही that भेजेंगे। the अब साधु any संत visitor आए should be तो satisfied बिना and offered भोजन, food, बिना etc. संतुष्ट किए कैसे भेजे? So धर्म now के he लिए was not at भेजना है। home. So तो how जिस he लड्डू will गोपाल की fulfill कृष्ण it? की सेवा So करते थे the वो Laddu प्रकट हो Gopal गए। whom he used to serve, साधु he संतों का appeared स्वागत किया, आप कौन? and मैं he घोष बाबू welcomed का the बेटा। citizens and he said that I बोले आप am Ghosh रुकिए, Babu's मैं son. दुकान में Said that जाकर आपके let लिए दूध just wait, लेकर आता हूँ, दूध let me लेना get some शुरू कर milk जाओ। for you and I will offer लड़का you गया warm milk. दुकान में दूध So लेने के this लिए, boy went भाई to get the 3-4 milk, लीटर दूध दे दो। that give me बोले 3-4 तुम कौन liters हो, आज milk. तक He तो said, मैंने who are तुमको you? कभी देखा I नहीं। haven't बोले seen मैं you घोष बाबू before. का बेटा। So he said, I अच्छा am तो the मुझे son नाम of याद नहीं है Ghosh इसलिए Babu. घोष बाबू बोलना So, पड़ता है, बाकी so I don't नाम remember the गोविंद name. घोष या वासुदेव घोष, दो में से एक है, So लेकिन घोष बाबू पकड़िए ना। it was either Govind or तो मैं तो Vasudev घोष बाबू Ghosh. का बेटा। हाँ? So he said, I am the son of बोले मैंने तो घोष बाबू को कोई बेटा Ghosh. ही नहीं है, मैंने तो कभी So he देखा said नहीं that तुमको। I haven't seen बोले भाई you संत before वहां पर and he मेरी doesn't राह have an देख answer. रहे हैं, उनकी Said the सेवा sages करनी are है, waiting for me. I एक want to काम करो, serve ये them. लो सोने So की अंगूठी, he ये gave आप his रखिए, ring मुझे finger दूध दे दीजिए, मेरे पिताजी finger आएंगे ring and पैसे said लेकर that अंगूठी you keep वापस it लेकर and जाएंगे।
my father will come, he will give you the money and he will take back this ring. So he took this milk and served the sages and saints who have came. When Ghosh Babu came back to the village, the milkman shop was there. He called, "You should come here. Your son came to my shop." Said, "Why are you joking? I don't have a son." He said, "Your son came. Your home. You had some visitors and there was nothing to serve, so he came here and took some milk." So he said that if you really just want the money, then I will give you the money. Why you are saying that a son came, my son came and took the milk? Said, who could that be? So he said, whose ring is this? This ring was given by your son in exchange of the milk. Ghosh Babu said, "This is my ring." And on the birthday of my Lord, I gave him a new ring as a gift. So Ghosh Babu realized that the Lord himself appeared and offered or satisfied the sages and saints. He became extremely satisfied. Even today in Mayapur, very near, there is this village where he used to reside. And when he became old, there was no one to serve him in his old age. The Lord himself served him. When the parents become old, then you have to serve them extensively. He started doing that. Ghosh Babu said that you are the Lord, why you are serving me? He said, haven't you served me? Throughout your life you have served me, but now it is my responsibility to serve you. When Ghosh Babu died, that time Lord himself did perform the last rites, and with his own hands he offered his oblations to him. And you will be shocked to know that even today, when it is the time of his death anniversary, who comes and how the food is prepared, and thousands of people are offered this food to offer oblations on behalf of Ghosh Babu. So the Lord come till day and to respect his relationship. This is the glory of our Gauriya Sampradaya. So have you seen one thing, notice one thing here? If the Lord desires, he can give his eternal abode, but he has performed oblation. He could have given his eternal abode to Narsi Mehta's father, but he has performed oblation. So by these pastimes, he is portraying that how important all these rituals are and should be performed diligently. So now, in this Shraddh Paksh, this is the last day. So let's listen in short the pastime of Narsi Mehta's Shraddh or oblation veneration ceremony. So how Dwarikadhish himself came and performed the ritual on behalf of his beloved devotee Narsi Mehta. So this is a pastime that Narsi Mehta was always engrossed in performing devotional service and singing the bhajans of the Lord. So he doesn't cares about the world. They are halfway inert like Jad Bharat. How the world exists and how it's working, they don't really care. So every morning he used to sit in trance after serving the Lord. And once it was the time to offer sacrifice for his father. So every year, Narsi Mata's father oblations were done by his elder brother Shridhar, and Manik Bhai used and Narsi Mehta used to go to their home and they used to help them.
and they used to perform this sacrifice for their father. So this time this happened, he was so engrossed in his devotional service that he didn't understood about the time and he couldn't go. And it was just the time to perform the Shraddh. And uh, in the Brahm Muhurta, that is around 4 o'clock, Narsi Mehta woke up and he's in trance and he's serving the Lord. Shri Radhe Govind Bhaj Man Shri Radhe Shri Radhe Jaya Jaya Radhe Shri Radhe Jaya Jaya Radhe। नरसिंह मेहता अपनी उस गरीब घर में एक छोटा सा मंदिर है और उसमें Narsi Mehta, who is a poor, destitute Brahmana, and there is a small temple. He is sitting there, and his wife is taking care of the home. She's cleaning the home, and Narsi Mehta is singing. So, and Narsi Mehta was singing, and so this is the time of early morning, 4 o'clock, highest time. And last night, Narsi Mehta and Manik Bhai, his wife Manik Bhai, then went to the elder brother's home, and his elder brother was so much angry, and he had this pride of wealth that I am the eldest and I am wealthy. He was elder in age and in opulence and wealth, and that nobody is far greater than me. So he came to Narsi Mehta's home and he didn't even knock his door. A respectable person knocks the home first. He didn't knock. He kicked the door, and with his footwear on his feet, he entered in the temple of Narsi Mehta and said that where exactly is Narsi? So he was the elder brother. So there is a modesty, dignity. So his wife said slowly that my husband is in trance, and the elder brother lost his control. Said, whenever I come, he is always engrossed in devotional service. Is there nothing beyond this? This, your husband performs devotional service whole day and whole night. Don't you know that today is the oblation ceremony for our father, and you were supposed to come and help us and making arrangement. So in this manner, when Sridharji spoke or bespoke so much, then his wife could not tolerate it more, and she thought that my husband is performing unallied devotional service with the Lord, and elder brother is saying whatever he liked to speak. So Manik Bai had her face covered with a veil, and she had this pain in her heart, distress in her heart that today, first time I have to speak. And in dignified manner, she replied to his father, son, brother-in-law, that, oh, elder brother, your younger brother is a devotee. He chants the holy name of the Lord. He serves the Lord.
इसमें बुरा क्या है? then what is wrong in हम that? तो छोटे आदमी हैं, हमारे पास We धन are नहीं है, not कोई साधन wealthy सामग्री or नहीं है, well-to-do. We don't हम have लोग much भजन करते हैं। opulence and wealth. इसका We अर्थ perform ये devotional नहीं service. कि Doesn't हम कुछ mean गलत कर रहे हैं। that we are doing આ something તમારો wrong. બીજો ભાઈ ભક્તિ કરે, ચોરી તો નથી કરતો। He is not a thief. He is not stealing anything. और यदि He is आपके मन में performing ऐसा devotional है service. कि And if in your heart you have this, श्राद्ध that आप ही कर सकते हैं, you are तो only देखिए capable to perform this अब oblation, की बार का then श्राद्ध जो है ना, this आज का time, श्राद्ध today's आप अपने हिसाब से कर sacrifice, लीजिएगा, you should हम do हमारे according हिसाब से to करेंगे। your will, and we will do according इतना to सुनते ही our श्रीधर जी मेहता, नरसिंह मेहता के बड़े भाई desire. तम So, गए। listening this, Shridhar ji बोले अच्छा, became extremely श्राद्ध अपने आप agitated कर and लोगे? angry. He said that you will मैं भी perform the देखता हूँ कि sacrifice for आप लोग father. कैसे Let श्राद्ध me see करते हो। how you do it. मैं भी देख लूंगा कैसे। ऐसा कह के He वो said चले in a गए। challenging mode, और यहाँ and तो he नरसिंह left. मेहता, And here, श्राद्धे हरे कृष्णा भाई। हाँ, जी प्रभु। स्वभाव समाधि समाप्त हुई और so when he came out of his नरसिंह मेहता trance बाहर आए। and Narsi Mehta came पत्नी वाणी outside, को कहते हैं कि देवी he घर told पर his कोई आया wife था? that, did someone visited us हाँ, today? आए She थे। replied, yes. कौन? मेरे बड़े भाई, मोटा Who was भाई here? आया था। Oh, your elder brother was वो here. आए थे तो So he कुछ came. ऊंची आवाज में आपने बात I की could ऐसा मुझे लगा। हाँ? hear that you were talking to भजन him करने वालों का in जो a सुर loud होता voice. है, The devotee वो who सुर performed आज devotional आपका service, नहीं था। हाँ? આપણે ત્યાં તો their ધીમા ધીમા voice should થોડા always સુર be low. બદલતા હોય। For us, we कभी change नीचा our कभी tones 10 ऊंचा times. कभी हाई। देवी भजन Oh, करने वाले का ये सुर dear नहीं wife, था। a devotee should not speak in आज a आपका high, सुर थोड़ा सा ऊंचा higher मुझे pitch. लगा। बताओ So क्या हुआ? today I felt that मानिक you were भाई ने speaking कहा कि loudly. बड़े भाई So आए थे और Manik Bhai आकर said that आपको our डांट रहे elder थे। brother was here हम न and he was बोल वाला scolding बोलता you, था, and he जो was भी मन में speaking आए what बोल रहे he थे। should be speaking, whatever he तो felt मुझसे like he रहा नहीं spoke. गया, So तो I मैंने couldn't कह दिया tolerate it, आपका छोटा and भाई I भक्ति told कर that रहा है, your तो चोरी थोड़ी कर younger रहा है। brother is performing devotional और service. इस He's not प्रकार से अनादर stealing, आदर and you're વિનાનું અન્ન લેવું disrespecting એથી him. સારું મરવું, અમૃત ભોજન અળગા કરીને પાષાણે પેટ ભરવું। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना, Goswami Tulsidas से ji मेघ, said, यदि Kanchan मेघ barse mein, सोने की भी वर्षा कर दे, if even the लेकिन gold अनादर हो is रहा हो तो ऐसे स्थान being पर कभी showered, खड़े but भी नहीं if you are रहना being चाहिए। disrespected, we और should आप never stand at इतनी that अच्छी भक्ति place. करते हो, और बड़े And भाई you आपका perform such a मैं beautiful हर बार devotional देखता हूँ service, कि आपका and I अपमान every करता time है, observe हर बार that अपमान करता he है। always disrespects you. तब नरसिंह मेहता ने जो अपनी पत्नी Then को कहा ना, Narsi एक Mehta गृहस्थी का replied to his संवाद wife, सुनने this जैसा है। conversation between a समझ लीजिए, householder सुनिए। is worth listening नरसिंह मेहता बोला, and understanding. गांडी Narsi Mehta ये replied, oh my beloved wife, પગલી મોટો ભાઈ છે। you ઈ have મોટો કહેવાય, અને જે acted મોટા such હોય ને, so વડીલો હોય ને, foolishly. ઈ બે શબ્દ He's our બોલવાના elder લાયક brother. હોય। If મોટા he બે says શબ્દ something, બોલવાના અધિકારી છે, he અને can આપણે સાંભળવાના he has અધિકારી। this position to speak to us छोटों in की that manner. गलती He is नहीं our भी हो elder. तो बड़ा Even if कहते हुए we अच्छा लगता है, younger one is not at और fault, छोटा but सुनते हुए an अच्छा elder लगता है। one can scold, અને and આપણે આ કઈ it શ્રાદ્ધ looks બ્રાદ્ધ માં better. કઈ ચૂલું ખોદવા આવ્યું છે And ભાઈ? સબ્જી કાટने को we चले जाना should चाहिए, not बुद्धिमानी इसी perform में है। हम लोग oblation. श्राद्ध It is करेंगे the ना। sign of intelligence. We are not नहीं नहीं able to पतिदेव, मैंने perform this. वचन दे दिया है, हम So श्राद्ध करेंगे। अरे we पगली, should just 3 go and दिन help से him. He said that मैं ठाकुर जी since की last सेवा कर 3 रहा days हूँ, I am सेवा में serving the भाग Lord. भोग चढ़ाने के लिए हमारे पास अन्न I नहीं है। don't even have a 3 food दिन से grain to प्रभु offer के to बिना our Lord. अन्न की सेवा Since कर रहा last हूँ, 3 days भगवान के we are लिए हमारे not पास serving अन्न any नहीं grains है, to the और Lord. तू We कहती don't है have the कपिला जी grains का for the श्राद्ध Lord, हम and करेंगे। you want
and you say that you have taken this pledge or vow that we will perform oblation to our father. So Manik Ben said, please forgive me, oh dear husband, but I have already taken this oath, but I have hidden you one thing from you. Although I have given all my ornaments, wealth, etc., gold, etc., and I don't regret it. But I have this nose ring which I have kept in hiding, that it will help when the time is extremely destitute. So you should just take this nose ring, you should take it, and whatever money you get, if not much, at least we will just invite 5 brahmanas and our bona fide spiritual master, and we will offer our oblations to our father-in-law. Narsi Mehta said that if you had this nose ring, you didn't give it to me before. Since last 3 days, the Lord is hungry, famished, and we could have offered food grains to him. She said, please forgive me, but today is the Shraddh or veneration for our father-in-law, so let's go and get it done. So Narsi Mehta went with the nose ring of his wife in the market of Junagadh to sell it. And I always say that what I see, that Narsi Mehta is not selling the nose ring of his wife. It is not the nose ring of Manik Bai, but it is the respect, honor of Krishna or the Lord, which will be, which was going to be sold. If something would have happened, then it would have been a smear on his character. So whatever money he got by buying this nose ring, he got the grocery, and for 5 people, whatever was required, they bought. But when he was about to get the key, all the money was already over. Manik Bhai said that you should invite 5 brahmanas. So it was almost 8 o'clock when this happened, and Narsimhata went to invite the brahmanas. When he went there, the senior brahmana was there, and Narsimhata requested, paid his obeisances. Jai Shri Radha Vallabh. He greeted. He said, this time, Dad, my father's sacrifice will be organized at our home. So I request at your lotus feet that you should bring 4 people. So in total, 5 people should visit us and give us an opportunity to serve you. We are not opulent, but please be merciful. But this Brahmana was so prideful. He said that you are going to perform the Shraddh ceremony. He said, yes. He he grabbed Narsimhata with his hand, and he took all the Brahmanas to make fun of him in midst of all these 750 Brahmanas. And he announced that today Narsi Mehta is going to perform this oblation or sacrifice, and if he do that, then we all should go and eat there. And all the Brahmanas agree, and they said, yes, we agree. Narsi Mehta wanted to feed only 5 Brahmanas, but now 750 were invited or self-invited themselves. But Narsi Mehta didn't say anything, and he went, a devotee is courageous if they don't count or calculate much. So the Brahmana said that we'll just make fun. What he's going to offer us anyways. So Narsi Mehta came and said, have you invited? He said, look at the mercy of the Lord, not 750 Brahmanas are going to come to our home. If it's today's wife, she would have taken the rolling pin in her hand. You haven't worked anything properly.
You have invited भोजन कराने में घी कम पड़ रहा है, to तुम offer 850 food to किलो five, घी लेकर आओ। even we don't have ghee, and you have नरसी invited मेहता की पत्नी ने 750 सोचा कि आप brahmanas. हमारा भाई Narsi जैसा Mehta's करते wife हो, said, तो your ये जो है brother, ना, ये बावरे हैं, ये बेचारे भोले हैं, गांव वाले ब्राह्मणों ने मजाक किया होगा और they इसने might सच have मान joked लिया with होगा, you, हमारे and घर you पे have thought 750 it to be ब्राह्मण आ ही नहीं truthful. सकते, कोई बात नहीं, They cannot सब come, मजाक but किया no होगा। आप एक worries. काम करो, ये लो तपेली, You do one thing, you go and हिंदी get में पतेली the कहते हैं, ghee हमारे तपेली क्या है, ये लो तपेली और अब घी लेकर आओ। and get some तो नरसी clarified मेहता butter or हाथ में ghee. तपेली Narsi लिए Mehta took this और लगभग and 8:30 बजे अपने घर से the pot in निकले। his hand, and ब्राह्मणों को 8:30 कहा था दोपहर को 12 बजे he श्राद्ध का told the भोजन brahmanas खाने आ that जाना, 12 o'clock you should be और ये here 9:30 to बजे offer घी the लेने food. निकले हैं। And at नरसी 8:30 मेहता he is जूनागढ़ की बात out है। to get the ghee. दी तपेली मैं तेली दी तपेली हाथ रे धरणी धरनु ध्यान धरी, मैं तेली दी तपेली हाथ रे धरणी धरनु ध्यान धरी, मुख गोविंद गोविंद गोपाल बोल, धरणी धरनु ध्यान धरी, मुख गोविंद गोविंद गोपाल बोल, धरणी धरनु ध्यान धरी। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर धननाथ विष्णु, जिहवे पिबत्स्वा मृतमेत देव, गोविंद दामो दर माधवेति, मैं तेली दी तपेली हाथ रे धरणी धरनु ध्यान धरी, मुख गोविंद गोविंद गोपाल बोल, धरणी धरनु ध्यान धरी। नरसिंह मेहता हाथ में Narsi तपेली Mehta had this pot in his hand, a vessel in his hand, and he came in the midst of the market to get the ghee, and he told the shopkeeper that, oh, Jashri Radha Govind, he greeted and said that I need some clarified butter. A merchant is a merchant. He said, just now we have got this fresh clarified butter from the cow's milk, which is very, very fragrant. And he said that whatever you can put in the pot, you can give it. He was glorifying this clarified butter and put it. And when he filled it, Narsi Mehta said, whatever money you want for this ghee, I don't have, but after 15 days, I will pay you with interest. So this merchant was regretting in his mind, why did I became so hurriesome? Oh, we cannot trust us whether they will give the money back or not. How should I refuse after I fill the pot? So, but he was intelligent. He said, no problem. You can take the ghee.
Even if you give 15 days, it's okay. But today in the morning, a lizard has fallen into this pot of clarified butter. Will it work for you? He said that no, I want to offer it to the Lord. So inwardly, Narsi Mehta also knew he doesn't wish to give the ghee and he is lying blatantly. So he said that you can take your ghee back, and he took back the ghee and rubbed everything. And then Narsi Mehta came to the next shop, and everybody was refusing. And yesterday's past, Narsi Mehta to perform sacrifice of his father in Junagadh market. Nobody gave him a drop of ghee, but not everybody is alike. It is said, हाट रे धरणी धरनु ध्यान धरी। उस जूनागढ़ की सीमा पर एक so वैष्णव on की the bank of or on the borders of this Junagadh, there was a Vaishnav shop who was the category of the Narsi Mehta. A devotee is the one who understands, who is empathic to the pain of others, compassionate for others. He went to Narsi Mehta and said that I want ghee and let me clarify that I don't have money right now, but after 15 days I will return the money along with interest. But today I'm getting late. I have to offer sacrifice to my father. But a devotee is a devotee of the Lord. He, a one who is compassionate. He is a Vaishnav. The Vaishnav said, it is your father's veneration ceremony. Your father is like my, you can take this ghee. He said that, but I will return the money. He said, I don't need the money. Narsi Mehta said, I won't like it. Then he said that, okay, if you really feel that way, then just sing a bhajan for me. If you think that you are just I'm giving you this clarified butter, then you just sing me a bhajan. So he started singing with his kartal. हुंडी स्वीकारो महाराज रे श्यामला गिरधारी। ए मने एक तमारो आधार रे श्यामला गिरधारी। हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे श्यामला गिरधारी। प्रहलाद ने उगारवा धर्यु नरसिंह रो। स्तंभ थकी वालो प्रकटिया ए वाले मार्यो हिरण्या कंस भूपरे श्यामला गिरधारी। हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे श्यामला गिरधारी। हे मने एक तमारो आधार रे श्यामला गिरधारी। नरसिंह मेहता ने भजन शुरू किया। Narsi Mehta started singing the bhajan. So, if you understand it as his nature, a good quality, when he used to start the congregation chanting a bhajan, he didn't care about the money. He lost track of time. So he started at 10:30 and 12 o'clock. He has to feed the brahmanas, and he kept on singing the bhajans one after one. And here it's about 12, and it's the time for brahmanas to come, and Narsi Mehta is busy, engrossed in singing the glories of the Lord.
But when a devotee performs unalloyed devotional service towards the Supreme Personality, and if their sum of work remains incomplete, then Narsi was singing the glories of Lord's name, and the Lord came to work for him around 11:30. Manik Bai was extremely worried. Where has he gone? Why he is not here yet? Brahmanas will be here in the first time in our life. We are offering this sacrifice. We have invited the Brahmanas. They will come here. And if we are not able to eat, then they will make fun of us. Everybody will laugh at our faces. And this husband, I don't know where has he stopped to sing the Lord's glories. Oh Krishna, my honor is in your hands. It will be a dishonor for you. मेरो क्या बिगड़ेगो मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगो जाएगी लाज तिहारी जाए गिलाज तिहारी मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगो मुरारी मुरारी हमारा क्या Oh, बिगड़ेगा? Murari, I will not be at loss. Anyways, people laugh at us, they will laugh at us more. But you will be dishonored. They will say that he was the devotee of the Lord, and so Shri is begging to the Lord. Narsi Mehta is busy in singing the glories of the Lord, and here this is the time of Brahmanas to arrive, and the Lord's honor is at stake. And the Vaikuntha started shaking. So when this earth shakes, then it is an earthquake. But when the devotee gets distressed, then the Lord gets shaking, and it is referred to as Vaikuntha come. And today, the Vaikuntha was shaking. He called Uddhav and all his other associates like Garur. He said to all his associates that what is the, he said that you should just get ready and leave at once. Where are we going to leave? We are going to Junagadh. He said, why? I will tell you on the way, but first we should start because we are already getting late. So from the eternal abode of the Lord, many associates of the Lord, Lakshmi ji, Akrur ji, Karur ji, etc., they all came from Dwarika. And on the way, he told everyone that Narsi Mehta has to offer sacrifice for his father, but he is busy singing the bhajans. And on the way, they are discussing, say that what are we supposed to do? They said, you should act like a caterer. So Uddhav, you will just chop the vegetables. You take care of it. So, Lakshmi ji, you should cook. So everybody divided their responsibility. He said that what will you do? I will take the form of Narsi Mehta. Then the Lord took the form of Narsi Mehta, and everybody became his team member, and they all entered Junagadh. I said, where is the home of Narsi Mehta? The people said, why you want to visit him? He said that there is a sacrifice. So we are appointed to be the cooks for that arrangement. So he said that is Narsi that much opulent that he has called the caterers. Somehow they reached his home, and Krishna took the form of Narsi Mehta, and Manik Bhai was standing on the door, and Lord came in the form of Narsi Mehta, and Manik Bhai has scolded her husband.
So she आज literally तक आपने picked him कोई up. काम ठीक से किया? Have you पिताजी का श्राद्ध है, worked केवल आधा anything घंटा well? बचा है। Only हाँ, half an तो hour मैं is भोजन remaining. कैसे बनाऊंगी, ये And सब कैसे how am होगा? I going to cook in और 30 पूर्व minutes गुरु को for आपने all the निमंत्रण Brahmins? दिया? And have you invited किन our 5 जन को आपने bona निमंत्रण fide दिया? spiritual कुल गुरु को master दिया? जब तक of मैं our कहूंगा clan? तब तक आपको कुछ समझ में Till नहीं at आता the है। point I don't say, भगवान you ने don't सोचा understand कि anything. आज तक Lord was कहाँ मुझे thinking, किसी ने नहीं डांटा, nobody has scolded और me यदि यहाँ पर खड़ा like रहूंगा this, तो and अनर्थ if हो I जाएगा, यहाँ stand से here, निकल जाने में ही भलाई I है। will be बोले scolded हाँ, more. मैं So कुल I गुरु should को just बुला quickly. कर आता He हूँ। said, okay, let me go and invite और बोले ये the कौन है, ये सब Kulguru. पूछा He नहीं? said, who बोले are प्रभु they? तुम He said चिंता मत करो, ये that you जल्दी should जल्दी not भोजन worry. बना देंगे, ये सबको So they will देखो all ये make सबको food लाए quickly. कैसे? बोले मैं But बाद में how did you बताऊंगा, want? इसको He said, करने I दो। will tell you later. But तो वो let's तो just do the पितृ, arrangements first. लक्ष्मी, पार्षद So सब all मिलकर the के eternal तैयारी में associates लग of the गए। Lord और started यहाँ पर भगवान preparing the श्री food. कृष्ण नरसिंह का And रूप here लेके Lord Shri कुल गुरु Krishna के has पास taken the आए। form of Narsi Mehta and went to उनके the द्वार spiritual के master पास of their पहुंचे clan और or खिड़की से family. ही देख लिया कि नरसैया आया है And और सुना this है कि he इसके घर पर श्राद्ध है। saw from the window, and उस he गुरुजी ने अपने बेटे को कहा दरवाजा saw बंद him कर ले। and said, and he knew that उसको घर he पे is आने about मत to देना। offer sacrifice. So he said that to जैसे his ही son नरसी that close पहुंचा, the इसने window अपना दरवाजा and धड़ाम the करके door बंद कर दिया। and don't allow him to come inside. He और closed the door उसने कहा कि at गुरुजी Narsi मैं Mehta's आपके face. पास आया Narsi हूँ, Mehta said, आज I मेरे am घर पर here श्राद्ध है, भोजन के लिए as we निमंत्रण है। have this sacrifice बोले for आज our तक तुम father. लोगों ने So कभी he मुझे said, दक्षिणा till दी day, है? have you ever कुल का given गुरु any बनाया, लेकिन तुम लोगों ने charity to कभी me? मेरा ध्यान रखा I'm है? your family priest, but बोले have क्या you ever खिलाओगे, taken क्या care of सेवा me? करोगे? And what are you जाओ going तुम to मेरे offer यजमान me नहीं, and मैं serve me? तुम्हारा गुरु नहीं। I am not your spiritual ये तो master, nor भगवान थे। are you my host. So भगवान ने he was the कहा Lord. कि ऐसा नहीं, The आप Lord said, कागज में लिख this is कर दो not, तो मैं मानूंगा। you should write it on the paper, only then अपने I बेटे को will बोला इधर आ, agree. कागज और He पेन told दे दे, his इसको son, लिख कर दे देता हूँ। लिख give कर me दे a दिया paper. कि And when he नरसी wrote मेरा it, यजमान नहीं, मैं उसका Narsi is गुरु no नहीं। more my host, and I am not और his कहा family निकल priest जा यहाँ anymore. से। I said और that बेटे को just कहा दरवाजा get कर दे lost. बंद। And he told his भगवान son वो that close the पर्चा door. लेकर वहां से निकले और देखा The कि ये Lord दरवाजा took द्वार this बंद page, कर रहे हैं, and लेकिन he saw आज that इस door was गुरु being का closed. घर का But द्वार नहीं, this family ये priest अपने has not भाग्य closed his का door. दरवाजा बंद He कर is रहा closing है, the door of his own क्योंकि ये fortune जानता नहीं because he is किसको ठुकरा unaware रहा है। whom he is ये rejecting. उसके घर का द्वार बंद नहीं हो रहा, ये उसके भाग्य का द्वार बंद हो रहा है। भगवान तो वहां से निकल गए। अब क्या So the करें, Lord गुरु जी left. तो चाहिए। Now, what shall we do? एक Because ब्राह्मण they need बेचारा the family खेत में priest. काम करके So जीवन there निर्वाह was करता था, a वो जब मर Brahmana गए, who was a farmer. भगवान He नरसी का went रूप there. लेकर। Lord took नरसी तो अभी was भजन still in में the ही form है, of ये Narsi तो Mehta. कृष्ण कर रहे Narsi हैं। Mehta is बोले busy हमारे in गुरु जी तो देख singing कर the बैठे glories हैं, of the आप Lord. मेरे गुरु He said बन that जाइए, family श्राद्ध priest करके is आइए, upset बोले with मेरे us, पास so कोई श्लोक you ही should नहीं come आता। and बोले कोई बात नहीं, be आप our आएंगे family तो priest. He said हम, that I don't any लेकिन पूरी verses. He said, क्रियाक्रम but you को are a मैं Brahman. He कैसे said, कराऊंगा? I don't know anything about the Karma तो Kanda. भगवान How ने am I कहा going to do? मुकम But he करोति was the Lord वाचालम himself. पंगुम लंग यते गिरी। भगवान ने जैसे ही उन्हें स्पर्श किया, उनके So मुख से as soon as he सरस्वती was touched by the लहरें Lord, और he सारे मंत्रों का उच्चारण got all the खड़ा हुआ है। transcendental knowledge. यहाँ क्या हुआ? He received all the transcendental knowledge. And उद्धव here, ने what सब्जी happened? समारी, Udharji was अक्रूर ने chopping the सारे बर्तन vegetables. चूल्हा लगाया, Akrurji और was लक्ष्मी जी arranging भोजन को the stove. तड़का देने And लगी, वघार Mother करने लगी। Lakshmi वो is भोजन कितना cooking the दिव्य food. होगा, Imagine how divine और वो transcendental that सुगंध food धीरे will धीरे be. बाहर फैलते And that फैलते फैलते fragrance जूनागढ़ is के चौराहे पर started पहुंची, spreading और ये जो in 750 the ब्राह्मण बैठे थे, सबको Junagadh. सुगंध आने And all लगी। these बोले 750 बहुत brahmanas होगा, who आज were कुछ sitting, they said नरसी that के घर पर "No, कुछ better- चमत्कार है। some अपने miracle बच्चों is को going बोले on in बच्चों Narsi Mehta's चिंटू home. मिंटू They पिंटू, told the बोले जरा children नरसी के वहां that जाकर go देख and कर check आओ तो in Narsi Mehta's home भोजन में क्या बना है। what exactly are they cooking. यदि वहां अच्छा भोजन होगा तो If दो the तीन food बार is डेली there, then करेंगे, बड़े we भाई will के go वहां। there. हमको तो And खाने if से it's मतलब है ना। better in his elder बच्चे brother's home, we आए will go there. दौड़कर, So the जहाँ children भोजन पक came रहा running था, और and सब कुछ देखकर वापस गए, they आंखों looked देखा at बाहर। everything बोले क्या and बन रहा है? they बोले told खीर, पूरी, that they are preparing ऊंधिया, kheer, puri, सफेद ढोकला, ondiya.
पीला ढोकला, Why? श्रीखंड, All types of dhokla, shrikhand. क्या क्या कहेंगे, लाल चटनी, લીલી ચટણી. अब जब बोलना ही है तो શા માટે So પાછા if we have પડવું to જોઈએ? speak, why should we और we speak પાત્રા, less? Patra. और अ, अ, उसकी सब्जी किसकी आती है?
समझो ना, सारे वेजिटेबल की सब्जी, So all types of vegetables were cooked and served. Rice, curry, dal, और अनेकों प्रकार की स्वीट, and many, जिलेबी, many variety of फाफड़ा, sweets, jalebi, fafra, भजिया, everything. गर्मा गर्म Bhajia, लाइव भजिया, live चना bhajia भजिया, was being served कोबी hot. का भजिया, तो एक से एक मिष्ठान बन रहा है। So everything was ब्राह्मण ने being सोचा, prepared ब्राह्मण भी देखो कैसे, efficiently, ये and लोग the जहाँ brahmanas thought, हवा होती वहां घूम जाते हैं, so लेकिन brahmanas तब just तो इस see बार what श्राद्ध wherever जो है they ना find a good नरसी के opportunity. वहां ही किया So they जाए, said क्योंकि this time हमारे we मन should में visit भेदभाव Narsi Mehta, नहीं है, हर बार because बड़े we don't भाई को जाता है तो differentiate इस बार why छोटे को क्यों we आकर्षित, always go આપણે to the ત્યાં elder એવું ન brothers હોય, home. આપણે તો We નાનાને can go ત્યાં to the પણ younger જઈએ, brothers home. ચલો ચલો છોટે કે We ભાઈ, can go there also. So બ્રાહ્મણોની let's સાઈડ go ઊભા to રહો, him. So now the ન્યાય brahmanas ચાલો, have ન્યાય. changed their course और because जैसे ही ब्राह्मण it was आने लगे, better in Narsi Mehta's home. So now the brahmanas नरसिंह started मेहता, coming, धीरे धीरे करके ब्राह्मण आने लगे, and नरसिंह मेहता ने कहा, अरे रे Narsi रे रे Mehta रे, ये said, ब्राह्मण लोग, आप लोग इतने these फटे brahmanas, हुए कपड़े पहनते हो, फटी you हुई are धोती, wearing these torn clothes. माणिक भाई, वो अंदर से Manik Bhai, ऐसे she साड़ी came को ऐसे outside. कमर में डालकर, बोलो क्या, Said, बोले what? हमारे बेडरूम He में said, in सोने our की bedroom, तार की बॉर्डर वाली जो धोती पड़ी है, there is this वो धोती सभी ब्राह्मणों को एक एक दे दो। woven dhoti माणिक with भाई सोचते हैं gold. कि You इसकी should धोती offer में it to this लगभग brahmana. 150 He फटे said that हुए छिद्र है, there are 150 और holes ये in his सोने की own तार वाली, लेकिन dhoti. आज बोले, And आज कुछ but today कुछ तो अलग हो रहा है, आज something कुछ is तो different. अलग हो रहा है। वो अंदर गई तो वास्तव में धोती She पड़ी went थी, inside, and there were so सोने many की dhotis तार वाली inside, धोती लाई और सारे which ब्राह्मणों को दे दी। had ब्राह्मण प्रसन्न, this ब्राह्मण सोच रहे golden हैं, यार thread, which were अपनी knitted with पत्नियों को golden बुलाने thread. जैसा है, यदि पत्नी The आएगी तो brahmanas साड़ी भी thought that मिलेगी। अपने चिंटू, मैं तो this is चिंटू good सबको for भेजा, जाओ wife तेरी माँ को बुला के also लाओ, to come. They और said that माँ को बोलना पूजा send की their साड़ी children पहन and कर said आए। that you should also सारे come and गए you और should wear सब ब्राह्मणों torn की clothes. पत्नियां भी आई, So all the brahmanas' wife और also ब्राह्मणों came, की पत्नी को नरसिंह मेहता ने स्वागत किया। and अरे रे Narsi रे रे, Mehta ये तो welcomed फटी their हुई wives and said पुरानी that साड़ी, you have माणिक, so old माणिक clothes. Oh भाई, Manik, आइए, bye, अब क्या है, come here. What is it बोले now? वो कलकत्ता की She said that सोने की from जरी वाली जो Calcutta, साड़ी है, the golden सोने की तार, bordered, ये जो कलकत्ता which वाली बनारस is की जो knitted साड़ी, with बनारसी, सारे gold ब्राह्मणों को thread एक एक दे दो। from Banaras, you should offer माणिक it भाई to मन में खार all गया, the wives ये of चला Brahmanas. करके आगे Manik जामनगर की Bhai साड़ी became कभी मुझे agitated. लाकर नहीं दिए, She was कभी thinking he राजकोट से hasn't लाके even देंगे, और ये giving me बनारस की बोल रहे any हैं, लेकिन आज sari कुछ कहीं even गड़बड़ from है Rajkot, इनको, आज कुछ नहीं है। Jamnagar, and he has अंदर not जाकर even देखी visited तो इतनी Rajkot. सारी But today साड़ियां he पड़ी is थी, एक एक telling, साड़ी उठाकर, and when she went इसके मन inside में and she saw so many बहुत saris, प्रश्न हो रहे थे। she had माणिक many, भाई के many मन में बहुत questions प्रश्न हो रहे थे, in लेकिन her वो सोचा heart. But कुछ she was जाए तो thinking, मैं पूछूं ना, if when they ये leave, सब then जाए only I तो मैं can पूछूं, ask. ये सब कहाँ Once से they आ leave, रहा then है, only I'll ask from where is he सबको getting साड़ी all दी। this. अब क्या कहा, So they gave saris to all नरसिंह the मेहता, Brahmana wives. भगवान ने नरसिंह मेहता का रूप लेकर कहा, माणिक भाई Then the सबको Lord सोने का told, पाटला दे दो, you सोने should की give चौखट पर बिठाओ, everybody a अंदर सोने का पाटला go बिठाया, सबको सोने a की थाली वाटका चमची दे दो, stand सोने of की gold थाली and वाटका चमची, give ब्राह्मणों them को कोई the भी विचार vessels of वो चमची हाथ में gold लिए plate and spoons, देख etc. रहे हैं, Everything was of बाजू gold. वाले को The बोले, Brahmanas couldn't believe, ये and they were just वास्तव में checking, सोने की लग is रही it है कि really सोने का gold? पानी चढ़ा हुआ है। Is it fake? Or is बाजू it वाले really कहते gold? दादा होना नहीं चाहिए, That this is और रख लेना made of अंदर, gold. कहाँ You अंदर, just अंदर keep माने it. कहाँ, जेब में, जेब में जेब ही You नहीं should है, keep it in your pocket. We don't have a जेब है pocket. तो जेब में रखूं, लेकिन तब तक तो भोजन आने लगा, So और now the ब्राह्मणों ने food तो was भोजन being किया है, served, and the अद्भुत Brahmanas भोजन, ate पेट to भर their कर fill. They आकंठ were भोजन extremely किया, और भोजन satisfied. करने They के बाद ate till ब्राह्मण खड़े हो their रहे थे, कहा, neck. And अरे when they were नेताजी about to ये leave, थाली the कहाँ रखी, Mehtaji, they said नेताजी that ने where shall we अनाउंसमेंट किया, keep थाली अपने this अपने साथ लेकर जाओ, vessel, a plate? So he said that whatever यहाँ भी utensils you have, कोई you should धोने take को them. खड़े नहीं रहे, धोने की So व्यवस्था थी, थाली धो के there was an लेकर जाओ, arrangement to लेकिन wash their ब्राह्मणों ने thalis, सोचा but यदि धोने को but they खड़े thought that रहेंगे if we तो stand there नरसिंह washing मेहता the का मूड utensils, बदल गया, तो then if he यदि changes his धोने के heart, लिए नल के नीचे खड़े रहेंगे और इसके मन में हुआ कि नहीं छोड़ कर जाए and तो he will फिर think ऐसे that now इसलिए if जो he थाली says that झूठी you should थी, leave it. कुछ So सब्जी they पड़ी took थी, कुछ दाल थी, जैसे तैसे वो their थाली को उठाकर thali, which still had the सारे food, ब्राह्मण घर little से food in निकले, them. लेकिन They अपने started to चिंटू को go to कहा their कि home, चिंटू, and then they told their sons, चिंटू देख जरा मेरे जूते कहाँ
just पर say, है। where are चिंटू ने कहा बाबा my footwear? કેમ તમે મને Chintu આવું said, પૂછો છો, તમને દેખાતું why are you નથી? asking me? You're not મારી able to આંખોમાં see? મોતિયા આવી ગયા છે? Have you મોતિયા got નહીં, પેટ આડું આવે છે। problem in your eye? He says that my stomach इतना is खा लिया है कि पेट बीच in में आ between. रहा है, मुझे मेरे He said that my मेरे ही stomach is obstructing चरण my दिखाई view. नहीं दे रहे हैं। I'm unable to see my own feet. तब I've चिंटू eaten बोला so much. कि Then मेरी Chintu भी said, ऐसी हालत है, मैं आपकी even चरण को I'm देख in कर the चल same रहा situation. हूँ। I'm just मैं walking, अपनी looking रोटी के at आधार पे your चल रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हैं। shikha on your जितना head. खा सकते थे उतना खाया। So whatever they could eat, they ate और to their नरसिंह heart's मेहता ने content, आनंद करा दिया and और वो थाली लेकर they निकले। all फिर भी enjoyed. नरसिंह मेहता They बाहर took the ही खड़े vessels, थे and Narsi Mehta was और standing outside. ब्राह्मणों को जाते जाते एक एक And सोने while का they were going, बिस्किट दिए। he gave every दक्षिणा में brahmana दान दक्षिणा सब कुछ अच्छे as से किया। charity, as दक्षिणा में दिए, a सबको भोजन करा one दिया। gol biscuit to सब each लोग of them. आशीर्वाद देकर So प्रसन्न everybody होकर started वहां से चले। showering और जब यहाँ पर श्राद्ध हो boons गया and ना, benedictions, and they तब were satisfied. नरसिंह And मेहता when पानी this was वो तो completed, कृष्ण थे, वो तो पसीने so से he was लथपथ। Krishna, he was sweating तब profusely. अपनी पत्नी को कहा कि माणिक He भाई, told his मुझे wife, बहुत oh, थकावट लगी है, I'm शरीर में really बहुत tired, पसीना है, मैं I'm दामा कुंड में sweating a स्नान lot, करके आऊं। let me go and अब देखो take a bath भगवान in ने Damakund. इतिहास में So the कितने Lord, बड़े in बड़े his काम history, किए। he has done so many इस great सृष्टि things. चलाने वाले को सृष्टि चलाने में थकावट नहीं लगती, He लेकिन hasn't अपने faced भक्त any पर trouble जब in कोई भीड़ आती है, controlling this world तब which he प्रभु has को भी created. पसीना But निकल when जाता है the कि कहीं devotee is मेरे distressed, भक्त then की लाज ना the लग Lord जाए। also sweats करोड़ों profusely ब्रह्मांड that चलाने में my उसको थकावट devotee नहीं should है, not lose लेकिन his एक honor भक्त की रक्षा करने में just to हाँ, protect प्रभु को one पसीना निकल devotee. गया है। He has तो sweat, कहा कि he मैं is स्नान feeling करके आऊं। माणिक भाई की or हाथ sweating में profusely. जल्दी आओ, मारे Manik तने Bhai says प्रश्न that पूछवा छे, you should come मुझे आपको प्रश्न पूछने हैं, quickly. मेरी I have so बहुत many प्रश्न questions हैं, तुम to जल्दी स्नान ask you. करके आओ। So you should भगवान immediately मान leave गए। and come back quickly. गुजराती में The बोले Lord left बोला and આવે ઈ બીજો, told in Gujarat, હવે તારી સામે આવું। हाँ? I am not going भगवान to लेकिन come back. जाते जाते But while भगवान ने leaving, सोचा the Lord कि thought, ब्राह्मणों को मैंने भोजन करा दिया, I have offered ये food to कुल the गुरु जो है Brahmanas, ना, उसको but तो this अपने family भाग्य के priest, दरवाजे बंद कर दिए he थे। has closed the doors of his लेकिन सारे fortune. ब्राह्मण जब वहां से But निकले तो कुल when गुरु ने all the पूछा Brahmanas था left, कि वे कहाँ से the आ रहे हो, family नरसिंह priest जी asked और that वहां तो ऐसा हुआ they वैसा हुआ। said, तो they कुल गुरु started को telling वो what हुआ कि happened, यार मैं तो रह and गया, Kul Guru मैं family गया priest thought होता that, तो oh, अच्छा था। I should have also gone. भगवान ने सोचा Lord कि thought, यदि ये गौर महाराज if नरसिंह मेहता के पास this आएंगे family तो priest मेरा नरसिंह उसको comes, क्या दे and पाएगा, how Narsi Mehta हैं? will इसलिए मैं give ही him उसके anything. पास So जाकर आऊं। let me तो go भगवान to this जाते family जाते priest. He उस visited the गुरु के family पास priest गए, while leaving कहा महाराज क्षमा and कीजिएगा, told, please लेकिन forgive me, आप आइए but भोजन you कीजिए। should come तो and फिर से eat. पुनः घर पर लेकर आए। And तुम्हें he नावा took क्या him था? back home. नरसिंह He मेहता said, की you पत्नी went, ने कहा his दो ही wife बाकी asked, रह you गई थी, went उसको to भोजन करा दे, भोजन take a करा bath. दिया, उसको भी सब कुछ So दिया और he फिर gave से everything to यात्रा the की family priest, और अब and भगवान निकले then हैं। now the Lord has started भगवान to निकले leave. और तब तक तो So शाम he हो left, गई थी और and it was नरसिंह मेहता already की स्थिति almost क्या evening. थी? And what was the तो वहां situation पर of खड़े Narsi थे, Mehta? He's still हे singing the glories of the Lord. जागने तुझादवा कृष्ण गोवाणिया तुझ विना धेनुमा कौन जाशे, हे जागने तुझा देवा। नरसिंह मेहता हजी जादवा ने जगाड़ता था उसके मन में कि अभी तो ये सुबह ही है। Narsi Mehta is still thinking that this is morning now. It's almost evening, and he is still लेकिन जैसे singing जैसे the glories नरसिंह of the Lord. मेहता सचेतन And हुए, संध्या as का he समय, came दुकानदार to बोले his यार senses or क्या महाराज conscious, तुझे मुझे तो he said, बोलना चाहिए कि इतना you टाइम should निकल have गया। told me बोले आप there's गा so रहे much थे, time has आपको elapsed. He आनंद said, आ रहा you था, were मैं singing, भी सुन रहा you था। were enjoying. So बोले I लाओ लाओ was तपेली लाओ, घी listening. लाओ। Said, get me अब that ओरिजिनल key. नरसिंह मेहता घी की So now तपेली this लेकर original घर की ओर जा Narsi रहा है। Mehta
is coming with the pot or vessel of ghee और माणिक भाई to his home. वो And बंदर Manik दर्शन Bhai की राह देखकर खड़ी थी, कब आएंगे, is मैं प्रश्न expecting and पूछूंगा। waiting for अब Narsi नरसिंह Mehta, मेहता that हंस is the के Lord in सफेद the form of तपेली Narsi में Mehta. घी So और घी लेकर he had this ghee and he came घर पर पहुंचे हैं to his और home मन में मेंटली प्रिपेयर थे कि and he was बात लगाओ mentally मुझे थोड़े prepared से that I am तैयार हो going to जाओ, be तैयार हो scolded by जाओ। my wife, so नरसिंह let मेहता me get पहुंचे ready. So he और went सामने and से reached कहा home कि and देवी told his wife, क्षमा "Oh, करना, मुझे आने में थोड़ी beloved wife, देरी हो please गई, forgive me. I got little late." थोड़ी देरी हुई थी, देरी कितनी Was हुई, it little मुझे late? क्षमा कर देना, आने में थोड़ी देरी हो Please गई। forgive me. ये लो घी, This is the भोजन ghee तैयार करो और and मैं prepare the food. गौर महाराज को बुला And कर आता हूँ, सबको बुला let me कर call रखता the हूँ। family priest and others. नरसिंह मेहता की पत्नी Narsi तो अवाक Mehta's रह गई। wife was फिर से बोलो completely आप क्या shocked. बोले अभी? She said, "Can you please बोले repeat ये it? घी लो, You मैं take this ब्राह्मण और ghee or बाजी को clarified बुला butter. कर आता हूँ, I will भोजन invite the कराता हूँ। brahmanas and the family priest." नरसिंह मेहता की पत्नी कहती Narsi हैं, Mehta's wife said, इतना मजाक, अपनी "You पत्नी से are इतना मजाक, joking with your अरे wife in मजाक such a मजाक grim की भी manner. तो हद होती है। There should be a limit for आप कहते हो fun कि हम also. गरीब हैं, दरिद्र You है, और say अभी that we are wretched, 750 ब्राह्मणों को destitute, बुलाया poor और उसे people, इतना and अच्छा you भोजन invited कराया, 750 इतनी people इतनी and दान you दक्षिणा offered दी, गुरुजी को such भोजन, great food दान and दक्षिणा करके आप you gave स्नान so करने much गए charity और अब and then कहते you हो went कि to घी take a लो। bath and now you're saying you take this ghee महाराज and prepare डिवोटी food. हो आप, आपको You are a इतना मजाक devotee. नहीं करना You चाहिए। should not नरसिंह make मेहता so ने much कहा, fun. फिर से बोल, क्या कह रही है तू? She's, he बोले said that, आपने तो "Can you सबको please श्राद्ध repeat what you कराया, said? इतने You 750 लोगों को offered श्राद्ध everything कराया to and और fed करा क्या? 750 brahmanas and you gave them so much नरसिंह मेहता ने charity कहा, वो as well." मैं था? Narsi Mehta said that, "Was कौन? it ध्यान me? से सोच के बता, वो Just कौन था? वो listen, मैं था? just बोला think हाँ, carefully. Was it me? वो आप ही थे। It was you." She देवी, confirmed with conviction. He said, "Oh, यदि वो dear मैं था wife, if तो it वो was मैं कहाँ me, चला गया? then where is that person?" बोले सारा काम करके कहा कि मैं He थक said, गया हूँ, he दामाकुंड said में that, स्नान करके "I आता हूँ, तो am स्नान tired कर now. लिया। Let me go and take a dip in the holy water." नरसिंह ने कहा, पगली, Narsi Mehta said, मेरे एक "Oh, प्रश्न my का जवाब दे, तूने उसे डांटा तो innocent नहीं था? wife, have you डांटा नहीं था? scolded that person?" मैंने He कुछ said, बाकी नहीं रखा डांटने में। "I have scolded him देवी very देवी, harshly." वो He मैं said, नहीं था, "Oh, beloved wife, वो it was हमारा not ईश्वर, me. It हमारा was प्रभु, our Lord, वो हमारे the कृष्ण Supreme था। Personality of Godhead, Lord Shri Krishna मैं Himself. भजन कर रहा था, I was busy मुझे तो समय singing का the भी your ज्ञान नहीं था। glories of the Lord, and जो I भी lost track of मेरी time. अनुपस्थिति में जो भी And हुआ, in वो my मैं नहीं absence, कर whatever पाया। happened, it was not done by हमारा बाप me. था, वो ईश्वर It था। was our Lord कहाँ who गया? did it." दामाकुंड Where में। did he go? नरसिंह मेहता He went to बिना Damakund. जूते Narsi पहने Mehta, नंगे पांव दौड़ा, without कन्हैया कृष्ण barefooted, he द्वारिकाधीश। started running कृष्ण तो नहीं towards आए, Kanhaiya Dwarikadesh, but Krishna दामाकुंड has से already left. प्रकट हुए। नरसिंह मेहता ने इतना ही कहा, Narsi Mehta कृष्ण, said, "Oh Krishna, पूरे जूनागढ़ को भोजन कराकर you have अपने offered भक्तों food को to the भूखा whole रखेगा? Junagadh, but you have left कृष्ण, your तूने पूरे जूनागढ़ devotee को भोजन famished. करा दिया, भक्तों You को have भूखा fed रखा the जाएगा? whole Junagadh, but you नरसिंह have मेहता kept ने me केदार राग hungry." छेड़ा He और जैसे sang ही Kedar केदार Rag, गाया, and as he sung that, वैकुंठ से भगवान from कृष्ण और Vaikuntha, eternal रुक्मणी, abode, ब्रह्मलोक Lord से ब्रह्मा Krishna, और Rukmani, ब्रह्माणी and Brahma, और and कैलाश से Brahmani from Brahmalok and महेश और from Kailash, महादेव और पार्वती तीनों Mahadev प्रकट and हुए Parvati भक्तों। ji, they all appeared. नरसिंह मेहता ने कहा Narsi Mehta कि said, आपने सबको भोजन कराया, "You लेकिन have आप बिना offered food भोजन to के everyone, गए, but you आपने भोजन didn't नहीं किया। eat anything आपने and you सबको went, भोजन कराया, अब मैं you आपको offered food to भोजन everyone, कराना चाहता but हूँ, मेरे now साथ I want to चलिए। feed you. Please ब्रह्मा come with विष्णु me." महेश So तीनों Brahma, ऋषि Vishnu, गणों Mahesh, को along बुलाकर with their wives, कृष्ण और रुक्मणी went to को Narsi बिठाया, Mehta's home. ब्रह्मा ब्रह्मांड He को made them बिठाया, शिव और sit, पार्वती को बिठाया उस छोटी सी कुटिया में, and और in this नरसिंह small मेहता ने अपने cottage, हाथों से and भोजन Narsi परोसना Mehta शुरू किया। started serving the Lord with his own hands. जब भोजन परोस रहे थे When भक्तों, he was दिल तो serving, तब फटता है the heart कि was नरसिंह ने shattered कहा when कि Narsi प्रभु said, मुझे "Oh एक my मिनट Lord, दोगे आप? can you give क्यों? me a moment? Why? मैं मेरे बड़े भाई को बुलाकर लाना Let चाहता me हूँ।
invite जो my कि elder हमारा brother बड़ा भाई है। no matter जब what, but नरसिंह he ने is इतना my कहा elder ना, brother. मैं बड़े भाई को When बुलाना he said चाहता that हूँ, I want उस to दिन ये call my गिरनार, elder brother, ये at गिरनार that झुक time गया this भक्तों। Girnar उस दिन ये गिरनार भी पिघल गया, क्योंकि ये melted, वैष्णव, ये भक्त because का गुण है this कि is the इतना quality of अपमान a किया pure था devotee बड़े of the भाई Lord. ने, Although he was गाली disrespected by देने his elder में, brother, हैं, he was गाली करने में abused कुछ बाकी नहीं रखा and he बड़े left भाई श्रीधर nothing जी महाराज ने। लेकिन आज भगवान to मेरे घर पर disrespect. आए But हैं, today मेरे the बड़े Lord is भाई को ये at my home. सौभाग्य मिलना चाहिए। नरसिंह My मेहता elder घर brother के should पांव छू also कर बड़े get भाई this वंशीधर जी महाराज के पास opportunity. गए He went barefoot to his brother's home और अपने बड़े भाई, and हैं, told के पास to जैसे his ही elder brother. जैसे ही पहुंचे तो बड़े As he भाई को तो entered सब there, पता चल ही गया था। elder brother has नरसिंह मेहता के already was चरणों में aware. प्रणाम करने गए, बोले He fell नरसिंह down जी at the તમે feet हमारा of बाप his ही हो, younger brother. He said, आप "You हमारे are बाप like हो, my father. You are my elder मैं brother." हमारा मोटा भाई हूं। रोते हुए बड़े भाई अफसोस करने लगे Weeping, कि his अतिशय brother कयो was अपराध, regretting, नरसैया "I have मैं तारो offended a अतिशय कयो devotee. अपराध। To नरसिंह what मेहता ने extent कहा I मैं have तो offended छोटा you?" भाई Narsi हूं, Mehta भाभी said, चलो "I am बड़े your भाई चलो, younger घर brother. पर प्रभु आए Please हैं, come." देरी मत करो। Oh, नरसिंह मेहता अपने brother बड़े and भाई और sister-in-law. भाभी को लेकर Narsi भगवान Mehta की came पंगत with में his बिठाया। brother and मुझे आपसे his इतना ही कहना है कि sister-in-law आपके and कुल made में, them आपके sit परिवार में एक भी with नरसिंह जैसा भक्त the आ Lord. जाए ना, I just आपको want to say, भगवान की पंगत में बिठा देगा, if भगवान के you have बाजू a में बिठा devotee देगा। like Narsi Mehta in your नरसिंह मेहता family, ने then he अपने will बड़े make you भाई sit वंशीधर with को the भगवान Lord. के बाजू में बिठा दिया। He made his elder brother sit with आज the Lord श्राद्ध कराया, भोजन कराया। and offered सो इस sacrifice प्रकार to से his father. So, in इन this श्राद्ध manner, के दिनों में during these नरसिंह मेहता days का of श्राद्ध veneration, स्वयं this भगवान Narsi ने Mehta आकर Shraddh परिपूर्ण was किया। performed by the Lord इस Himself. लीला में, इस कथा में So, in this अनेकों pastime, गुण, अनेकों there are शिक्षा, many अनेकों qualities and सिद्धांत प्रस्तुत learnings किए and हैं। teachings and लेकिन philosophical points. श्राद्ध But का अवसर है, this is the एक time of सुंदर मैसेज। यदि oblation. हम I just भगवान want की to convey भक्ति a करते beautiful हैं, message. If we perform devotional भगवान से service towards the संबंध Lord, जोड़ते हैं, if we attach तो हमारा ourselves श्राद्ध a relationship स्वयं with the Lord, भगवान then करते हैं। our इसमें sacrifice भगवान is performed by the कोई Lord लज्जा Himself, नहीं है, and He भगवान doesn't कोई feel शर्म नहीं ashamed मनाते of हैं। that. तो ये नरसिंह मेहता के जीवन की So, एक छोटी सी this घटना। is the uh, आज true incident from Narsi पितृ Mehta's पक्ष life. So, today समाप्त हो रहा है is the और हम concluding day of सभी the अपने Pitru अपने Paksh. So, पितरों का and स्मरण किया we all have remembered और our मन तो ancestors ऐसा करता and है forefathers. कि It, हम रोज I उसी feel that प्रकार से we पितरों should का do it स्मरण करें, every day. We पितरों should को नमन remember करें। our forefathers, ancestors, जो भी है, समूह में no हम matter what. हमारे माता पिता पितरों का स्मरण न कर सके, Collectively, लेकिन if we are जीवन unable में to do सदैव that, but पितरों का in ऋण, our life, we पितरों should की कृपा, always उनका never अनुग्रह forget सदैव their याद debt रखें। on us. We are indebted. We जब भी should कोई always be कार्य करें, grateful. अपने Whenever आप we को do or पूछें, perform any मेरे good बाप work, दादा को we ये should अच्छा think, लगेगा, will my मेरे कार्य मेरे माता पिता को forefathers like शोभा it? देंगे, Will it be क्या ये suitable उनकी उन्नति for करेगा? our parents? Will this make जब them इतना भी progress? सोचेंगे If तो you just बुरा think कार्य this करने much, से हम बच you will जाएंगे। avoid doing हम सब anything that is bad. माता पिता के ऋण में हैं, We जीवन all में are कुछ भी indebted to करें, our parents and माँ बाप forefathers. का ऋण Whatever हम we do in चुका our नहीं life, सकते। we can never repay और the यदि debt of our हम parents. चाहते And हैं if कि we हमारे wish a बच्चे भी desire हमारी सेवा that करें, our तो children should हमें हमारे also माता serve पिता us, की then सेवा करनी we चाहिए। should serve our parents. संतान थी सेवा चाहो, संतान छो सेवा करो, कारण जेवूं करो तेवूं भरो, ये भावना भूलशो नहीं, जेवूं करो तेवूं भरो, ये भावना भूलशो नहीं। मुझे सत्र समाप्त करने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन हम सब I समय don't feel like concluding this session, but we all are bound by the time factor. So let me conclude here. And I pray at the feet of all of your parents
because by their piety and their charity and their piety, and result of that, that you all are successful in your life and are performing devotional service towards the Lord. This is such a great mercy. I sometimes feel, I get goosebumps that it might be possible that our parents could have chanted the holy names of the Lord, the 16 rounds, but in our past history, these Mughals and the cruelty done by these people, our parents didn't left their Sanatan Dharam, that is their greatest mercy on us. Otherwise, they could have changed their religion. We would have been somewhere else. But this is the surrender of our forefathers, that we can see that no matter how much violence and cruelty was there, the people were forced to change their religion, convert themselves. But our forefathers never changed or converted their religion, and because of that, we are here, taken the shelter of Gita and Bhagavatam. It is because of their heart sacrifice and shelter, surrender. So this is the extreme mercy. So we should remember them, and we should pray for them, and we should perform our devotional service so that they can also be benefited. So I just want to thank all of you, especially the host family, the Patel family. I take your permission to leave. So let's conclude the today's session with Jai Jaikar. श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्री कृष्ण चंद्र भगवान के जगत गुरु